who scored 181 unbeaten in the first game in the inaugural game of the tournament. Nazir knocked up on the attack. It's going to be Guldan on strike. Hubert. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी का। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अंततः प्रतीक्षाएं समाप्त होते हुए और यहां प्रारंभ होने जा रहा है यह फाइनल मुकाबला। पहली पारी वैली स्टार्स गांदरबल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है किश्तवाड़ टाइटंस के विरुद्ध, और दो प्रारंभिक बल्लेबाज आदिल गुल्टान और उनके साथ इश्तियाक इलाही रॉबी के नाम से लोकप्रिय ये दो विस्फोटक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। इश्तियाक रसूल नाग के नाम से लोकप्रिय एक बेहतरीन खिलाड़ी वो अभ्यास कर रहे हैं और वे करेंगे शुरुआत गेंदबाजी में। हालांकि लाइट्स जो हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं, फ्लड लाइट्स ऑन है, दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ चौगान क्रिकेट स्टेडियम किश्तवाड़ और एक अलग प्रकार का रंग, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। शुरुआत होती हुई इस फाइनल मुकाबले की, और देखना होगा एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, एक शानदार मुकाबला रह सकता है, क्योंकि एक तरफ अगर वैली स्टार्स गांदरबल की बात करें तो उनके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, गेंदबाजी में उनके पास विकल्प हैं, ऑलराउंडर्स की भरमार है। और वहीं पे किश्तवाड़ टाइटंस की बात करें तो उनके पास भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो। ऐसे में एक कांटे की टक्कर का मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, एक शानदार मुकाबला इस समय प्रारंभ होने जा रहा है। शुरुआत होने जा रही है इस मैच की और पहली गेंद लेकर के तैयार। दूर वाले छोर से दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। थर्ड अंपायर बिल्कुल तैयार और ऐसे में पूरी तरह से पूरी टीम तैयार। किश्तवाड़ की पूरी जो जनता है वो तैयार है इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। और ऐसे में जिक्र करें एक अच्छा मुकाबला रह सकता है, कांटे की टक्कर का मुकाबला रह सकता है। शुरुआत होने जा रही है, बड़ा मुकाबला। हालांकि कुछ बातचीत वहां पे दोनों बल्लेबाजों के साथ इस समय अपने साथी खिलाड़ी द्वारा, और ऐसे में देखना होगा जहांगीर लोन विकेट पे नजर आ रहे हैं। मैदान में फील्डिंग करनी है, आकिब मीर टीम का हिस्सा है, उसके अलावा इश्तियाक रसूल टीम का हिस्सा है, तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। एक बच्चा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला रह सकता है। आप इस लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। एक बेहतरीन संघर्षपूर्ण मुकाबला, और हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित, धन्यवाद उनका भी करना चाहेंगे। शुरुआत होती हुई फील्ड सजाई जा रही है मुनव्वर, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। पहली बार इस क्षेत्र में क्रिकेट का इतिहास, लेट्स प्ले, और पहली गेंद लेकर के नाग राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार अच्छी गेंद थी, अंतिम समय में गेंद को तिरछाड़े बल्ले के साथ दिशा दे दी और सीधे फील्डर के पास बगैर किसी रन के। तो शुरुआत फाइनल मुकाबले की पहली पारी, पहली गेंद नाग शुरुआत कर चुके हैं और वहीं पे आदिल गुल्टान जिन्होंने शुरुआत की है आज बल्लेबाजी में। कुल मिलाकर जिक्र करें तो काफी हाव भाव उत्साहवर्धित दर्शक नजर आ रहे हैं और काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। पूरी मैनेजमेंट की बात करें तो अंततः वो पल आ चुका है जिस पल का काफी समय से इंतजार था। तो शुरुआत तो हो चुके हैं इस फाइनल मुकाबले की। इश्तियाक रसूल अगली गेंद लेकर के, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेले, दौड़ पड़े सिंगल के लिए। ये पहला रन खाते में और एक रन यहां पर खाता खुलता हुआ वैली स्टार्स गांदरबल का। एक बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रारंभ कर चुका है इश्तियाक रसूल। बहुत ही बेहतर विकेट है। शुरुआत अगर हम बात करें, नई गेंद से शुरुआत की है नाग ने, और काफी घातक होते हैं शुरुआत में साबित नाग। नई गेंद से तेज गेंदबाजी उनके पास है, विकल्प उनके पास बहुत सारे, वेरिएशंस उनके पास हैं, तो ऐसे में एक चुनौती रखने वाले हैं इस फाइनल मुकाबले में मुनव्वर। Thank you, Nazir, and thank you, Sohail Bhai. The scorer for today's match, of course, you are absolutely right. Nag isn't easy to face when he's got the new ball in his hand. And this time, Robbie onto the front foot and blocks it back at the bowlers, and not for runs. It's a dot delivery. May remind you once again, the vital toss won by Ganderbal captain, and he decided to bat first, knowing that it's a pressure game. It's a final match. There is going to be always pressure on their nerves. So better is to bat first and put runs on the board, and under lights it won't be easy to chase down while batting second. So let's see how things will unfold and how the two teams will adjust to the conditions and adapt to the conditions here at Chogan. As we watch Nag again, that's a beauty. This time trying to latch onto it. He was just trying to lay bat onto it, unable to lay bat onto the ball, and his speed and all ends up into the safe end. So wicketkeeper, no problem over there. Scorer man aesthetic, 1 for none. Guldan is up the mark. Robbie's yet to open his account. He's yet to get underway and up the mark. Well, set field on offside, heavily caught on the offside. Nog has to pull out. At the fair again, Robbie having some issues over there. It's a huge crowd. It's hostile in some of the areas here at Chogan. In many folds, tens of hundreds here at the center to witness the final match being played between Valley Stars Ganderbal and Kishtwar Titans. Titans unbeaten in the tournament. What a run they enjoyed.
Beautifully driven, but straight to the man at mid-on. It looked a good one. Looking at his posture, looking at his body balance, everything is right behind. He takes his body forward with the bat and worked it away nicely to mid-on. There is field, there is production, not for runs, a dot delivery. And the dots are going to be crucial, but Robbie need to understand that he has to put premium on his wicket. It is just the beginning. This is the first over we are in. Here is Nag again. This time gets hit on the pad and up goes. The finger is given out. Listening to the noise. And crowd right behind Kishtwar Titans. As the tall lanky man is given out LBW. Ishtiaq Robbie is still having a word with his partner over there. But he's given out. Here he's walking back to pavilion. He trudges back to hut. Robbie, tall lanky lad, misread that one completely. I think ball dropped up a certain length. He wasn't expecting, not what he intended on that occasion. And he misread that one completely. You can't trust the bounce of the surface. That's another question here. Even Danish Muzaffar told me looks like a good one when you look at the outer surface or the outer look of the surface. But when it comes to the action and the game is going on here, it's unfolding right now. And how it will pan out, that remains to be seen. These were the words from Danish Muzaffar. How it will behave when play will start. Now things are looking a bit difficult over here. If you hit the right lines and lengths, you can make the batter's life tough and difficult in the middle. It can be daunting at times. Herculean task for the top order here. It's down to number 3. Guldan having a word with his partner over there. As Robbie has gone back, the highest run scorer of the tournament, highest run getter. And he's holding that upper hand when it comes to the most invaluable player of the tournament, MVP. Scoring 181 unbeaten in the inaugural game. And it's where he announced his arrival here at Chaugan and Kishtwar Premier League, Season 1. Sohail, scorer for today's game. The scorer and the set station. Setting it up nicely for we guys here in the com box. And you're watching JK Sports Time Facebook, moreover YouTube. Enjoy the live vibes, enjoy the game of cricket. Wherever you are, stay there. We're here to tell you the pros and cons. It's 1 for 1 after the completion of first over. We're going to be in over number 2nd. Ganderbal need a partnership. On the other side, if we talk of the bowling unit, the fielding first, they need to keep things tight and keep pushing. Now trying to warm up a bit because of the biting cold, stingy at times. It's a cool and coolish evening. It's November down and under, or the down here, and it's 1 for 1. Autumn down at now. Winters are on cusp, on verge, and it is 1 for 1 after the completion of first over. That was a tight over, and he bowled it on a tight note. It is 1 for the loss of 1. Rinku Singh to Ritik Singh to bowl from other end. He's going to be he's a left arm spinner. He's going to bowl from far end as far as our com box is concerned. He's the boy from Udhampur. He's going to bowl. He's going to roll his wrist over the ball. Here is the first ball of fresh ever. That's in the air and straight down the ground. One bounce. We'll have to wait and watch. Listen into the noise again. They're enchanting Guldan, Guldan. And he begins his operation with a clinical boundary. I think it's a boundary, but that remains to be seen because we're going to wait for the final call from umpire over there. It's 1 bounce 4 that were brought to you by Just Bukor, and the first 4 of the match. Guldan is off the mark. No slip in place. Wicketkeeper Vaitali up to the stumps. Fly to Nova. And take a look. That is peerless. And it's Adil Guldan for you. And believe me, this lad is going to lit up the sun. He's going to go off to the bowlers. Fearless switch, it comes into play. And that is a night skier off the bat of Adil Guldan. And that's done the distance. Just Bukhara 6 coming. Nazir, it's Guldan for you. Ritik on the receiving end. And Ganderbal 11 for the loss of 1. Nag is looking concerned at the moment. बहुत बेहतर बल्लेबाजी पर रॉबी का विकेट ज़रूर खोया है यहाँ गांदरबल की टीम ने, पर वापसी करनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ शुरुआत चाहिए तो उसके लिए एक साझेदारी ज़रूरी। और
निश्चित तौर पे अगर देखा जाए और देखना होगा, हालांकि अभी भी हर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा वो 4 अथवा 6, और अभी भी थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। यार वो कहाँ है, इसको बोल एलईडी चला देगा, हमने डिसीजन कहाँ से देना भाई यार। थोड़ी सी विलंबता खेल में दोबारा आप बने रहिएगा, और निश्चित तौर पे खेल जो है वो इस समय वर्तमान में चल रहा है। और अगली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और खेला जरूर अलीम के पास गेंद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 11 पे 1। दूसरा ओवर इस समय फाइनल मुकाबला, ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, और इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेले। एक बार फिर रन नहीं मिलेगा, डॉट के साथ संतुष्ट वहां पर दोनों बल्लेबाज, और कोशिश जरूर यहां पे आदिल गुलडान और उसके साथ साहिल आए हैं बल्लेबाज, और 2 दिग्गज खिलाड़ी बीच मैदान में परिस्थितियों को जानते हैं, और इन परिस्थितियों में आपको बल्लेबाजी करनी है। एक और अच्छी गेंद, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर की हो गई समाप्ति। 2 समाप्त, वैली स्टार्स गांधरबल फाइनल मुकाबले में 2 के बाद 11, 1 विकेट के नुकसान पर रॉबी अपना विकेट गंवा चुके हैं। Robbie will be kicking himself. He knows that it was a big day. It was a superb night that in the finals, and he couldn't fight today when his team needed badly. Robbie, and that experience not coming into play doesn't make an impact. You needed to bat through the innings, and Robbie's on his way. Now it's down to Guldan and Sahil Shafi. Sahil is another talented lad. He's coming from Hotup's. Looking at his experience, the number of runs he has scored, as far as Cricket Heroes app is concerned, he's got a terrific record. Superb all-rounder from Hotup's of Srinagar. The third over is about to start. Nag to continue. And captain himself has got the ball in his hand. Nag is the skipper, making some adjustment in the field. Backward of Skyleg. Sent to the boundary line. Here is Nag. Pressure first ball. Nice block from Sahil Shafi over there, and Sahil knows that it's important to stick to the basics. No need to risk his wicket here. There is no need to take undue risk. Just try to put premium on his wicket and make sure that initiative sees it, and it is 11 for the loss of 1. Now trying to drive the ball, it was a drivable length. Outside off over there, and asking the batter to come forward and drive the ball. He obliged, but no connection, doesn't connect that shot. Would have been a lovely shot through the covers, but this time round he gets beaten in the end. And it's a ploy clear that they're going to attack here. He's got a slip in place. Anything miscue, anything not up to the mark, and that
Ajishwan can fly to the slip cordon. He's got that slip in place. That's why he's offering that drivable length here. This time half tracker works it nicely onto the onside. There is fielder fumble in the deep, but no problem. Just a single. And with that single, Sahil is up the mark. It brings Guldan on strike, 12 for 1. Guldan and Nag has played a lot of cricket. Whose experience, whose skill set will make an impact? Who will rise? Who will shine? Let's see on this one. Will it be Ishtiyaq Rasool? Are we gonna see Adil Guldan going downtown and distant? They need a perfect start here. They're already one down. Lovely scenes. Wonderful vibes. Here Chogan. Quality. Beauty. Absolute majestic. Just Bukhara 4. And that's Guldan for you. Anything short. Anything wide. And he leant on it nicely. Cut away nice in front of Scott. And into the cover point boundary for 4. And that just Bukhara 4 takes it to 16 for 1. It was nice shot coming up the bat of Adil Guldan. He stretches forward. He saw the length and puts it away, getting invaluable 4 runs. As we watch Guldan right on this time, he was just trying to guide it down to the third man, chasing the ball and just watching the ball with keen observation and under his eyes, and lets it go through. In the end, he was just trying to run it down to the third man, but unable to lay bat onto the ball. There was extra bounce and the pace behind the ball. I think that's the reason he can't dab it away. The good part of Guldan is he's looking confident tonight, and he looks in it is just the evening, but this match is gonna continue till late into the night. But looks like that it's almost a night here because of the darkness around the center. And this place, it's lit up because of the floodlights, and around the center there is no more light. It's gone completely dark as we watch Nag again. Valley Stars are one down, and this time round there is a fumble. There is a fumble from wicketkeeper, and it run down to the fine leg boundary for 4. Bye signalled. So why he isn't happy? Look at the signal from the umpire over there. It was byes, and he thought there was an inside edge. And with that, just Bukhara 4 overdone after the completion of 3 overs. They are 20 for the loss of 1. Nazir, steady start. Yeah, they won down early down, but these two need to recover the damage. तीन समाप्त हुए हैं, 20 रन बने हैं और ऐसे में एक विकेट जरूर मिला है यहाँ किश्तवाड़ टाइटंस की टीम को। शुरुआत बेहतर, हालांकि इश्तियाक रसूल को सफलता मिलती हुई। साहिल और उनके साथ आदिल गुलडान ये जोड़ी बीच मैदान में एक प्रयास कर रही है, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा नए ओवर की शुरुआत सामने वाले छोर से। इस बार अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी और सम्मान देना बहुत ज़रूरी, यहाँ आक्रमण करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से शुरुआत देंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है आपके लिए और आपकी टीम के लिए। इस बार गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर जा रहे हैं पर उनकी पहुंच से बाहर और गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका 4 और आए हैं खाते में। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की ज़रूरत साहिल और गुलडान को। हालांकि साहिल स्ट्राइक पे है, गुलडान नॉन स्ट्राइक छोड़ पे एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बेहतर शुरुआत यहाँ चाहिए इस फाइनल मुकाबले में। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुँचा है फाइनल मुकाबला। इस बार बैक फुट पर जाकर के खूबसूरती के साथ इसको ड्राइव किया, बस सीधे फील्डर के पास आके मीर थे, वहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या अभी भी टिकी हुई करीब 24 अथवा 25 पे, 24 एक विकेट के नुकसान पे। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, एक कदम आगे निकाला था, वो लंबा डग आगे बढ़ा था और वहाँ से जहाँ गेंद ने टप्पा खाया था वहाँ से गेंद को ऑन साइड में मारना चाहते थे पर सफलता नहीं मिली और बाकी का काम पूरा किया वहाँ विकेट कीपर ने बगैर किसी रन के।
अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी सही टप्पे पे, और उतना ज़्यादा वो अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने के। फाइनल मुकाबला किश्तवाड़ प्रीमियर लीग पहला एडिशन 2025 वर्ष। और इस फाइनल मुकाबले में एक तरफ किश्तवाड़ टाइटंस क्रिकेट क्लब, दूसरी तरफ वैली स्टार्स गांधरबल। हालांकि वैली स्टार्स को बल्लेबाजी का अवसर मिला है, यहाँ सफलता, स्ट्रोक बेहतर है, एक शानदार फील्डिंग वहां पर, और निश्चित तौर पे एक समय ऐसा लगा कि शायद गेंद वहां पर फील्डर को चकमा देगी, पर लाजवाब फील्डिंग वहां पे इश्तियाक रसूल द्वारा, और कुछ रन जरूर बचाए, मात्र 1 रन जरूर आया। ओवर की यहां पे समाप्ति हो गई, और इस प्रकार से 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 वैली स्टार्स गांधरबल। और निश्चित तौर पे देखना होगा यहां से किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, ये पहली बार इस फाइनल मुकाबले की वैली स्टार्स गांधरबल की टीम को बल्लेबाजी का अवसर मिला है, और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक भी उपलब्ध हैं इस फाइनल मुकाबले का आनंद लेने के लिए, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शक आए इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों का आनंद लेने के लिए, और आज भी इस फाइनल मुकाबले में। हालांकि पहली पारी चल रही है, किश्तवाड़ टाइटंस की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है, और अब तक 4 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन बने हैं। पहले विकेट की तलाश यहाँ पे, और वो 1 विकेट ज़रूर मिला है, पर उसके बाद से एक और विकेट का प्रयास यहाँ पर, और कोशिश ज़रूर की यहाँ से शुरुआत में साझेदारी मिली, अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, एक खूबसूरत मुकाबला। 5वें की शुरुआत, और एक बार फिर इश्तियाक रसूल लगातार दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेला। हालांकि 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े, 1 रन और पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को। यहाँ पे बल्लेबाज साहिल और अब आदिल गुलडान सामने। रन संख्या 26 पर 5वें ओवर में, क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी नाग ने, 2 ओवर ऋतिक सिंह ने, ये 5वां ओवर पावर प्ले ऑन है। फाइनल मुकाबला, पहली पारी, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से समय गेंदबाजी होती हुई पवेलियन एंड से इश्तियाक रसूल, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी खासी गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, और इस बार अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चौका मिलता हुआ, जस्ट बुखारा चौका। 4 और गुलडान के खाते में 4, वैली स्टार्स गांधरबल के खाते में साहिल शफी और आदिल गुलडान की जोड़ी बीच मैदान में 30, 1 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर की गेंदबाजी, और अच्छी शुरुआत अब तक, पर इस शुरुआत को और बेहतर करना जरूरी है यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि रॉबी का विकेट गंवा चुके हैं, शुरुआत में सस्ते में भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद से इन 2 बल्लेबाजों पर दायित्व है कि एक बेहतर साझेदारी निभा रहे, और ये साझेदारी अगले 4-5 ओवर में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। That's a good shot. What a shot. Leg glance. Gets 4 for that. Just Bukhara 4 coming. Anything shot, anything off tracker. Freebie. And there it is. 4 coming off the bat of Adil Guldan. Second of the over. 2 on the trot. Successive balls. Dispatched nicely. 1 through the backward up point. The next one backward up Scare. Behind Scare is Loving. Be the onside, be the offside. In deep love with these 2 areas. Oh, it's noisier, it's hostile. Crackers are going off, and crowd making hue and cry. It's rumble and bumble. Huge noise. This time Slurver one, attempted Slurver, and he picks up that one nicely. That's the beauty of Guldan. He waits for the ball. He read it properly, saw that he rolled fingers over the ball. Nice observation, great awareness of the game, keeping eyes on it. Is very watchful at the moment, but need to carry on and continue. Perseverance and resistance, or the resilience, is important here. Will he be able to resist? Is he gonna do that here tonight? Because his team need him badly. As we watch Nog again. This time works it away nicely. And he scampered through quickly for a single. That's all he's going to get here. 35 for 1. This is the 5th over we are in. And you are watching JK Sports Time Facebook, more over YouTube. And this game is coming your way from Chogan. Once a meadow, now a cricketing hub. The powerhouse of excitement. And right now in the lap of mountains. The lofty mountains. The twinkling lights around the center. Crowd in many folds enjoying it here at the center of Chogan as we watch Nog again. Look at that one, right on top of that one. Lovely sound of the bat. Unable to get it through. That marks the completion of over number
5 done. It's 35 for the loss of 1. A number of extras 4. And it's 35 after 5 overs. They're going 7 and over. Not bad. But need to continue. That's the important thing. Take a look on the two teams who are Adil Guldan, Azim Rath, Danish Mazo, Ishtiaq, Robbie, Junaid, Nadeem Dar. The playing 11 of Valley Stars. And if we talk of the other side, they have Nag. Yes, Ritik will continue. They have Nag in the lineup. They have Ritik, they have Adil Rishi, Asif Manzoor, Adil Vani, Nasir Kumar, Wahid Tele, Jahangir Lone, Akib Mir. And this is the team from Kishtwar Titans. Almost all the big names. Nadeem Dar is playing for Valley Stars, the skipper of the side. Danish Muzaffar is there. Robbie's gone back to Hut. Sahil and Adil in the middle. That's a good looking shot onto the onside. Backward up scare again. This one is going to give him 4 more runs. That 4 brought to you by Jasper. Swept nicely. Earlier on it looked like that. He didn't middle it. He didn't middle it properly, but looking at the result, the end result matters. That's 4. And he gets 4, and now the music is going on, which is irritating at times. Well, I don't like it at all in the background. It really disturbs you. And listening to the noise, rubber whistles are going on. This is the final match underway. Gonna be boundary number 2 in the form of buys. But they're gonna take it. It hardly matters how they come. They need runs over here. Just Bukhara 4. Back-to-back boundaries. Score propelled to 43 for 1. This is the last of mandatory power play. And we'll have to wait and watch. It's 43 as we are in the 6th over of the game. This time Guldan swings, doesn't connect. Cross the line is an option when there is bounce and offer. This time it did bounce a bit. But Guldan need to take care of his wicket. He has to understand that he has all the time in the world. On the other side, bowlers need to persist with some tight lines and lengths and just try to variate over here. Use your variety and variation, and you have an opportunity. And likewise, you have all the time to execute your plans to perfection. Guldan again with that long stride forward, trying to swing it away. He's known for that kind of a slog, and when he connects it, it's gonna find that 6 or a 4. But here he missed out as that extra bounce, nearly getting better of the batter, but he survives, so no problem at all. This time dabs it away. He's gonna pick 1 here, and that's all he's gonna get. Are they gonna push for 2? And that's gonna be risky 1, so they decided against the second one. It's 1 only on that one. That marks the end of power play. Power play is finished, done. They finished power play on 44 for 1, and with 1 wicket down. This is Kishtwar Premier League Season 1 going on between Valley Stars Gandarbal and Kishtwar Titans. Toss won by Valley Stars, and their captain Nadeem Dar decided to bat first. And look at the crowd. Now they're losing. Huge crowd. Jammu and Kashmir police personnel and the CRPF team over here. They're just trying to take care of everything. But these are the disturbing scenes. Crowd need to understand. They need to respect the game of cricket. The gentleman's game. This is everyone's game, and the game is above all. Akil has got the ball in his hand. Akil will bowl. On strike is going to be Sahil Shafi. Valley Stars fighting it out in the very first innings. Under lights, never going to be easy. Cold weather, but atmosphere is electric. It's superb. The lovely scenes here at the center. So no one in slip corner over there. No slip remote, short fine in place. The man at backward a point, man at straightish point. Extra cover is Akib Mir. He's got a man at super cover boundary to take care of everything behind the 30 yard. Fresh over. First ball, and he goes deep in crease, trying to punch it away. Inside it, and ball rolls past to the blade. And luckily that one eluded the stumps. So no problem, he survives. Akil again. The left arm spinner, second time in this over.
Guldan, look at his bat speed and look at that posture and the balance, the bat speed and the eyes on the ball. It's lovely. It is so nice and serene at times. The pace he generates sometimes using those supple wrists, and look again, he's using that supple wrist in between to press it away, but there was extra bounce after pitching. It did surprise him for a while, but he has to overcome all this to find some runs. As we watch Akhil again, he's now trying to keep that backward point in place. Will Guldan fire this way? Will he use that long range? Will he go after? Is it going to be a half track outside off? Is it going to be a short one? Width on offer. Let's see. Akhil. Here he comes on to ball and shaping for that big slog sweep. Shot for LBW. And umpire is unmoved, so no problem there. Guldan gets away with that one. There was a huge shot for LBW and a stand down. Good call in the end. Take a look again on this screen. We can see that. A ball did hold up a bit in surface. So it's still a good decision because we don't have the replay system available over here. A good call from umpire over there. 44 for 1. This is the 7th over we are in. And you're watching JK Sports Time YouTube. Moreover, it's also coming your way on Facebook. And JK Sports Time is available nowadays in Play Store. You can install the app. And it's also live there on app. This time waits for the ball. That's good cricket from Guldan. He waits for the ball patiently, then guides it away with the soft hands, dropping his wrist on that occasion. A single is all he's going to get. With that, a single there is addition to the score. 45 for 1 as we are in over number 7. Please welcome Sheikh Nazir. धन्यवाद मनोवर। और इस समय रन संख्या की बात करें तो 45 से 1 विकेट के नुकसान पर 6.5 अंतिम गेंद बैकफुट पर जाकर के खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की ओर खेले। फील्डर तैनात हैं, केवल एक सिंगल मिल जाएगा और 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ ओवर की हो गई समाप्ति। यहाँ 7 ओवर समाप्त और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 46 1 विकेट के नुकसान पे 8 अतिरिक्त रन अभी तक आए हैं। और वैली स्टार ने अच्छी शुरुआत दी है अब तक, क्योंकि एक विकेट रॉबी का गिरने के बाद जिस प्रकार से ये साझेदारी धीरे धीरे से बिल्ड कर रहे हैं, ये जरूरी है बहुत बेहतर तरीके से इस साझेदारी को निभाना। पर किश्तवाड़ टाइटंस की टीम चाहेगी एक और विकेट की तलाश में, हालांकि वो कोशिश में है एक विकेट मिले। पर अगर दर्शकों की बात करें, क्राउड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज क्राउड है, क्योंकि डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में मुकाबला बहुत बढ़िया चल रहा है। ये पहली पारी फाइनल मुकाबला किश्तवाड़ प्रीमियर लीग प्लेइंग 11। वैली स्टार्स गांधरबल आदिल गुलडान, आजिम राथर, दानिश मुजफ्फर, इश्तियाक इलाही, रॉबी, जुनैद बशीर, नदीम डार, साहिल, समर, उमर लेफ्टी, वसीम रजा और जहूर जोलो। और वहीं पे दूसरे छोड़ अगर जिक्र करें किश्तवाड़ टाइटंस क्रिकेट क्लब का, आकिब, मीर, आसिफ, मंजूर, आदिल वानी, अखिल, आज जगह मिली है अखिल को। इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, एम अलीम, नासिर बशीर, ऋतिक सिंह, सचिन कुमार सिंह और वाहिद तेली। सचिन कुमार भी आज टीम का हिस्सा है। अखिल और सचिन कुमार का आज इन हुआ है इस टीम में किश्तवाड़ टाइटंस में, और दर्शक एंजॉय कर रहे हैं और काफी उत्साहवर्धित दर्शक नजर आ रहे हैं। हर गेंद के साथ उत्साह देखने को मिल रहा है। ये फाइनल मुकाबला किश्तवाड़ प्रीमियर लीग, और ड्रोन कैमरा जो इस समय प्रयोग में लाया जा रहा है और दर्शक एंजॉय कर रहे हैं इस पल को, इस मोमेंट को। ये किश्तवाड़ के लिए काफी ऐतिहासिक क्षण है इस फाइनल मुकाबले में, और काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, गूंज इस समय दर्शकों के। सचिन कुमार सिंह का इस्तेमाल गेंदबाजी में, एक और परिवर्तन यहाँ, और देखना होगा वो अब किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाएंगे। 46 1 विकेट के नुकसान पे गुलडान ने 30 बनाए 26 गेंदों से, साहिल ने 8 बनाए 12 गेंदों से। नेवर की शुरुआत बाएं हाथ के गेंदबाज, और इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक मिडिल ऑफ द बैट से, और साहिल के बल्ले से ये बड़ा स्ट्रोक, छक्का आया है पहली गेंद पर। स्वागत किया सचिन कुमार सिंह का। 52 1 विकेट के नुकसान पे 50 पूरे होते हुए वैली स्टार गांधरबल के अलग रंग में दिखे आज ये दोनों बल्लेबाज, और ये रंग दिखाना जरूरी है इस फाइनल मुकाबले में। एक शानदार मुकाबला, बेहतर मुकाबला। चौगान क्रिकेट स्टेडियम किश्तवाड़ इस समय गूंजता हुआ, दर्शकों की आवाजें इस समय दूर दूर तक पहुंच रही है, इस बात का श्रेय देते हुए कि किश्तवाड़ की धरती पे पहली बार यह मुकाबला। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक कदम आगे निकाला था, बीट हुए वहां पर, गेंद सीधे बल्लेबाज को बीट करते विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 52 1 विकेट के नुकसान पे 7.28वां ओवर, पहली पारी फाइनल मुकाबला। बाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार फुल लेंथ की गेंद सामने खेले हैं, हवा में गेंद है,
और पीछे फील्डर 1 रन तेजी के साथ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और तब तक दूसरा रन भी, अच्छी फील्डिंग वहां पे, पर 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 52 से बढ़कर 54 रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर इस समय। एक अच्छा मुकाबला, बेहतर मुकाबला साहिल और उनके साथी खिलाड़ी आदिल गुलडान। हालांकि आदिल ने आज जो शुरुआत की थी बल्लेबाजी में इश्तियाक रॉबी के साथ, पर इस समय अभी भी अभिजीत हैं, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, पीछे फील्डर हैं तैनात है मलीम, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। वो 54 पे अभी भी 8वें ओवर में। ये पहली पारी दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ चौगान क्रिकेट स्टेडियम किश्तवाड़। फाइनल मुकाबले के दृश्य, अंजू सिंह और उसकी पूरी टीम इस समय उपस्थित यहाँ पे और हर पल का जायजा लेते हुए फाइनल मुकाबला। इस बार बैकफुट पर जाकर के खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, पर उस ओर फील्डर तैनात हैं, संभवतः 1 रन जरूर आ जाएगा दोनों बल्लेबाजों के खाते में। 1 रन और वैली स्टार गांधरबल 55, 1 विकेट के नुकसान पे। इस पहली पारी में यार इतनी ज्यादा मात्रा में आज दर्शक यहाँ उपलब्ध है। हालांकि अच्छी खासी दर्शकों की संख्या रही थी इस प्रतियोगिता के पिछले मुकाबलों में, पर आज बहुत ज्यादा। इस बार हवा में गई है गेंद, एक आसान सा कैच दबा देंगे वहां पर। यहाँ पे विकेट मिला और आदिल गुलडान को वापस जाना पड़ेगा। धीमी गति की गेंद, चेक के अंदाज में खेलने का प्रयास, गेंद हवा में उछली, आसान सा कैच लपक लिया और इस प्रकार से वैली स्टार गांधरबल ने दूसरा विकेट गंवाया है 55 पे 8वें ओवर में। Guldan unable to read that ball properly. He could have easily adjusted on that occasion, but in the end he's got to go. Wicket number 2 down and partnership is broken finally. The one that looked a substantial one, and they were just trying to recover from that early dent and repair the damage. There was a lot of work which needed to be done, and they were just trying to overcome that early dent. And as I earlier mentioned, it won't be easy. It's going to be a daunting task, a difficult one, an uphill task at times. But it was a great show from Guldan today with the bat, scoring 30 invaluable runs. And he was equally supported by Sahil on to 17 of 70 with a strike rate of 100. He was striking the ball nicely and giving measure to strike back to Guldan and letting him bat freely in free atmosphere where he could feel that he's got absolute freedom to bat on and take on the bowlers. But all of a sudden ball did hold up a bit and Sachin gets the rid of the big man, the big fish. And it's a huge success. And that was tasted by none other than Sachin for his team. Sachin Kumar Singh, 1 over, 1 for 9, a 6 of the first ball. Then look at the comeback. Just 3 coming in next 5 balls and a wicket going his way. Akhil will continue. Akhil will continue and batter will have to wait and watch who's in at number 4. And third umpire, batsman, it's Umar Lefty in at number 4. No, Wasim Raza is in at number 4. Raza comes out to bat at number 4. Thank you very much, Sahil, for looking into this one with deep care and just trying to navigate and taking a deep dig at it, looking into it again and again, taking care of that. Bowler is Akhil. Akhil will continue and it's going to be Sahil on strike. Disturbing scenes really in front of the com box. Well, I can't believe. Oh, this time gets hit on the pad. Over the knee roll. And no problem at all. He survives, so no problem on the very first ball, which was an easy one. It looked a difficult one to get rid of, as that was a quicker one again at the pace of the surface. This time it's a good looking shot straight down the ground. He's so strong there. It's a kind of a short arm jab at times. It's a different tactic, and the technique he uses when he roll back and just come back onto the back foot. Then playing that straight with that horizontal blade, which is really surprising everyone over there. Not bringing the vertical bat down, but going with that horizontal one. And it is 56 for 2 into the 9th over. Thank you, Rajesh. He has to take the care of everything here. He's got the major role to play tonight. And it's Mahendra Singh Ji here in the com box. Thank you, sir, and others. Anju Singh, the man behind this spectacle. Sunil Sharma equally supporting. Shagun Parihar coming together. And talking about Rashid Mama, Faizan, all are doing wonders. This time, he took pace off the ball. I think that's a good move from ball over there.
Thanks a lot, Ashraf Chaudhary. It's going really nice. The man behind the show, it is Anju Singh, the chief organizer, 2 for 56. As we watch, okay. Oh, that's a big shot. That's in the air. Who's going to take this? Rishi is there. And Raza gets away with that one. What could have been an opportunity. And Raza survives. 2 more runs added to Raza and team. He's off the mark. And Raza is lucky that he gets away with that one. And Raza is pretty lucky. He's the happier man at the moment out on the field. And it is 56 for the loss of 2 wickets. Raza on strike. Here is a kill. Oh, there is the extra bounce. There is the bounce. Vicious bounce at times. And it kicks off the deck. It hurries. And it took off. It takes off quickly off the surface. Overdone. We're done with over number 9. It's 58 for the loss of 2. John needs to take care of everything over here properly. He has to look into it deep. Because sometimes it is doing that hide and seek. It is just like that on off going on. And in that process, game is on its way. Over number 10. Yes, Sachin. No, dear. I think there is change in the bowling. We'll have to wait and watch. Is it Sachin? Yes, Sachin will continue. Sachin Kumar will continue. He has taken that sweater off this time around. Earlier on, he was bowling with sweater on. He decided to take it off. He's taken it off, and here he comes. The first one. Look, I was talking about Nazir. There is vicious bounce. There is that abrupt bounce. Once again, ball is kicking off the deck. And you got to keep your eyes and sixth sense in play. Well, thank you, Nazir. We will definitely take his opinion after a couple of balls here. Well, talking of the surface, yeah, ball is kicking and there is vicious bounce at times. Abrupt bounce. Sometimes it gains that strange pace of the surface and it becomes difficult all of a sudden when it hurries onto the batter and batter gets hardly some time to react. Now just trying to improvise and look, Raza is doing everything here. Wide signal by umpire. So no problem. Sachin Kumar is surprised. And they're talking about that change of stance from Raza. Raza telling them it's okay, there is no problem in that. While umpire is still telling Knox, no, you can't argue. It isn't that switch it coming into play or he didn't reverse his stance over this, so no problem at all. It is 60 on the board for the loss of 2. We're into the 10th over of the final match being played between Valley Stars Ganderbal and Kishtwar Titans. Kishtwar Titans backed by Shubham Shan. And talking about the Valley Stars, there is Mudassar behind this team, behind this wonderful club. Dig out nicely, goes past the man at short extra cover. Will he race away to the boundary? Phil gives the chase and does well. He gets around. Are they going to push for 3? This could be tight. And I think Raza is safe. Raza is home. He wanted 4-1. What could have been wicket down, and he survives. 3 more runs added on. And Raza is so quick between wickets. He is majestic when it comes to the running between the wickets. Raza is a super athlete, superb athlete, former Ranji player of Valley. I still remember an instant when Gambhir shared with other colleagues, who was that fielder who caught me short of my ground, and somebody told him it is Wasim Raza, the boy from heart of T of Srinagar. And it is 63 for 2. We are into the 10th over of the game. Sachin Kumar continues to bowl in his second of 1 for 14. And Raza is the man. He has to bat till the very last moment. A catalyst, a force to reckon. This time trying to launch it, doesn't get hold of that one. Now the batters need to understand, bowlers are weaving that kind of a web and magic. They're just troubling the batters over here with the flight, with the bounce on off, and they're getting that drift and turn. Two for 63. And talking to the attendance, and Rajesh, the TV umpire alongside me, telling me that what kind of attendance you're going to see here and what do you feel of it, what do you make of it. I believe that around 20k people are here. But I still remember that Pulwama, where I saw the, oh, up goes the finger. It's given out to LBW. And it is Sahil Shafi who's going to be on his way. And take a look again. We'll have to wait and watch. Well, still a good call, because we don't know how much bounce was there. And it's given us out. So the third one is down here, 63 for 3.
And another partnership with a little नहीं है तो आउट है बाय डिसीजन लास्ट little partnership over there, and it comes to an end with the fall of another set batter. Sile has gone back to Hut. So third one bites the dust. That follow wicket brought to by just I was talking about the spinners are also doing well. They're using the variety to perfection and troubling the batters. They're just trying to mix it up. Zolo comes out at number 5. Different combination being used in today's game. They're coming with a different batting order, keeping Nadeem Dar in the bank. The man they're going to rely on, Umar lefty, is yet to walk in. Some of the big lads who can up the sleeve and who can use that long handle, who can use that long range of shots, the wide range of shots they got from the cricketing book. It's 3 for 63 after 9.5. Guldan gone back to Hut. Robbie is back into the Hut. And latest casualty for Valley Stars in the form of Sile, who was given out LBW to Sachin Kumar. The second one tonight for Sachin Kumar Singh. He has found the second one against his name now. Second one falling into skitty overall. Third one down. This is Chogan. One Samido, now a cricketing hub. Now a centre of joy and happiness. Excited people over here. Gets hit on the pad. But muted shot turned down. No problem at all. As Zolo survives. Zolo coming from Shiri Baramulla. And this is the team coming from different parts of the valley. Namada's Valley Stars Gandarbal 63 for 3 after 10 hours. Halfway stage, halfway mark. And I was talking about that. The crowd, we witnessed it in Pulwama. That was 45,000. And there was a man highway blockade from one end to the other side for almost 3 or 4 hours in that night. And it is 63 for 3 as we are in over number. We're going to be in over number 11. Nazir, I was talking about that. There is bounce and offer. Even Danish told me we don't know what kind of a surface it is, how it's going to behave when the game is going to go on. And look, now the things are looking tricky at times. As a proper spinner, as a good bowler, as a good spinner of the cricket ball, you can make things difficult and you can make the life of batter hell in the middle. देखिए मैं सहमत हूँ आपसे क्योंकि जिस प्रकार का विकेट का बिहेव अब है, हालांकि नई गेंद से शुरुआत रही थी, अतिरिक्त उछाल था, लेकिन समय के साथ साथ विकेट जो है वो अलग प्रकार का व्यवहार, और स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा खासा जाल बुना है, एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी हुई है, वो मिश्रण देखने को मिला है, कटर्स का इस्तेमाल किया है, नकल बॉल का इस्तेमाल किया, तो बहुत बेहतर गेंदबाजी हुई है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद तो इस बार तिरछे बल्ले के सच को दिशा देना चाहते थे पर उसमें सफल नहीं हुए वहां पर बल्लेबाज वसीम रजा और ज़हूर जोलो। ये नाबाद जोड़ी 63 पे 3, 11वां प्रारंभ हो चुका है। 10.1 ओवर की गेंदबाजी, और गेंदबाजी अखिल के पास उनका तीसरा ओवर, और स्टंप आउट की अपील थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है निर्णय, और देखना होगा अभी भी निर्णय आना बाकी। पर बात हो रही थी विकेट की कि थोड़ा सा मुश्किल अब विकेट दिखाई दे रहा है इस फाइनल मुकाबले में, और यहाँ पे आपको उस क्षमता का इस्तेमाल करना ज़रूरी, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं तो फिर बेहतर प्रदर्शन करना ज़रूरी है, और जितना आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे उतना बेहतर आपके लिए हो सकता है। और एक अच्छा मुकाबला इस समय, ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी, और इस समय 63 3 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर वर्तमान में। एक अच्छा मुकाबला, किश्तवाड़ टाइटंस की टीम गेंदबाजी कर रही है, वहीं पे वैली स्टार्स गांदरबल बल्लेबाजी कर रही है, और आधी पारी समाप्त हो चुकी है, 11वां ओवर प्रारंभ हो चुका है, और देखना होगा बचे हुए इन 11 ओवर्स में, और अब जाकर के नॉट आउट का निर्णय आता हुआ, और सुरक्षित क्रीज में इस समय बीच मैदान में 63 पे 3 वैली स्टार्स गांदरबल। 10.2 ओवर की गेंदबाजी, जोलो को खाता खोलना है, रजा 5 पे हैं 6 गेंदों से, और 3 विकेट गंवाए। अखिल गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ निकाला, एक सिंगल के लिए वसीम रजा और उनके साथ ज़हूर जोलो ने 1 रन और संतुष्ट 1 रन से, और सिंगल डबल से 100 को रोटेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अब 1-1 रन से साझेदारी को बढ़ाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बार अब थोड़ा समय लें, सेट हो जाएं, क्योंकि विकेट अपने 3 गंवाए, विकेट सुरक्षित हैं पर ओवर्स जो हैं वो 11वां इस समय, और 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, तो कोशिश ज़रूर यहाँ पे बल्लेबाजों की कि आप बेहतर शुरुआत दें, एक अच्छी शुरुआत दें, एक अच्छी साझेदारी बिल्ड करें। दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं ज़हूर जोलो और वसीम रजा, अच्छा खासा अनुभव उनके पास। फिलहाल 64 पे 3, 10.3 के बाद अखिल, जिनका ये तीसरा ओवर है, 2.3 ओवर, कोई मैडल नहीं, 6 रन मात्र दिए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर के खेलने का प्रयास, अपील हुई, स्वीकार किया उसको, और समझ नहीं पा रहे हैं ज़हूर जोलो, या विकेट मिलता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में, और एक और विकेट का पतन, ये चौथा गंवाया है, जोलो को वापस लौटना पड़ेगा। वैली स्टार्स गांदरबल की टीम चौथा विकेट गंवा चुकी है 64 पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी में।
खराब शुरुआत यहाँ पे, हालांकि प्रारंभ शुरुआत में अगर हम बात करें तो वहाँ पे रॉबी का विकेट गंवाया, उसके बाद एक साझेदारी साहिल और आदिल गुलडान ने निभाई थी, पर गुलडान भी चलते बने, फिर साहिल भी उनके साथ और अब ज़हूर जोलो भी। तो ये चौथा विकेट इस समय गंवाया है। भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है, करीब करीब अगर एक अनुमान के तहत 20 से 25 हज़ार के आसपास यहाँ पे दर्शक उपलब्ध। अंजू सिंह सेन जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और उनकी पूरी जो टीम है वो इस टूर्नामेंट में निगाह बनाए हुए सफलतापूर्वक यह टूर्नामेंट और फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ। फाइनल मुकाबले में अब तक 4 विकेट गंवाए हैं वैली स्टार्स गांधरबल की टीम ने। किश्तवाड़ टाइटंस की टीम इसमें गेंदबाजी में हावी, वो बेहतर गेंदबाजी हुई है, शानदार गेंदबाजी हुई है, आक्रमण किया है, पर गांधरबल की टीम को एक साझेदारी की आवश्यकता। नए बल्लेबाज नंबर 6 पे और देखना होगा, उमर लेफ्टी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 64 पे 4, 10.4 ओवर की गेंदबाजी। अखिल को मिलने वाली ये सफलता, 2.4 ओवर कोई मैडल नहीं, 6 रन मात्र तीसरे ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं और एक मात्र विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतर गेंदबाजी, अनुशासन है, पैनापन है और किफायतीपन है, कसी हुई गेंदबाजी। और उत्साहवर्धित होगी इस समय टीम किश्तवाड़ टाइटंस, क्योंकि उनको 4 विकेट मिल चुके हैं और ज़्यादा रन बने भी नहीं है, मात्र 64 रन बने हैं 11वां ओवर। पार्टनरशिप की आवश्यकता, वो क्षमता है बल्लेबाजी में, पर दबाव है। अखिल इस बार बैकफुट पर जाकर के उमर लेफ्टी ने खेला, हालांकि अपने फॉलो थ्रू में सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, ये रन संख्या अभी भी टिकी हुई 64, 4 विकेट के नुकसान पे। और देखना होगा 64 रन अभी तक बन चुके हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला है। आखिरी गेंद का आना बाकी 11वें ओवर में, और लीजिए। और समझ नहीं पाए वहां पर उमर लेफ्टी, पर अखिल ने क्या गेंदबाजी की है, बेहतर गेंदबाजी, बहुत बेहतर गेंदबाजी, शानदार, आकर्षक, विश्वसनीय प्रदर्शन यहां किश्तवाड़ टाइटंस के गेंदबाजों का, और एक के बाद एक विकेट प्राप्त किए हैं। और उमर लेफ्टी को वापस लौटना पड़ेगा, बोल्ड हुए हैं वहां पे। और ये 5वां विकेट, आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं 11 ओवर में मात्र 65 पे। पूरी तरह से दबाव इस फाइनल मुकाबले में। अरे निश्चित तौर पे काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है आज वैली स्टार्स गांधरबल का इस खूबसूरत विकेट पे। हालांकि विकेट उतना बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है, पर जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है, अखिल की गेंदबाजी आप देख सकते हैं, मात्र 6 रन। उमर लेफ्टी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, हालांकि बीच मैदान में अभी उनके साथी खिलाड़ी वसीम रजा नाबाद हैं। और देखना होगा अब क्या जुनैद बशीर का इस्तेमाल किया जाएगा, दानिश मुजफ्फर का इस्तेमाल किया जाएगा, आजिम राथिर होंगे या नदीम डार और समर, ये आने वाले बल्लेबाजों में। पर दानिश मुजफ्फर सबकते नजर आ रहे हैं, जी हाँ, छोटे कद के खिलाड़ी, विकेट कीपर, बैट्समैन, और वो अब मैदान की और नंबर 7 पे बल्लेबाजी के लिए। मनोहर काफी दबाव में इस समय टीम, क्योंकि मात्र 64 रन 5 विकेट, आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं मात्र 11 ओवर में, 9 ओवर का खेल शेष है। तो कहीं ना कहीं दबाव साफ नजर आता हुआ वैली स्टार्स गांधरबल पे। Exactly under the pump here. Lost wickets in a quick succession over here. In a kind of a cluster, we have seen a couple of wickets going down. One of the set batters, Sahil Shafi, was sent packing. And later on, we've seen that it's getting difficult to bat on a surface which was looking friendly one of the 50-50 earlier on. Danish Muzaffar comes out to bat and he's got Wasim Raza in the middle. Now the two seasoned campaigners in the middle. The Dio, the combo need to put their heads down and stitch a stand, share a stand over here to take care of the rest, as they're in a spot above the fight on half their team back to heart. You're watching Jiggy Sports on Facebook. Moreover, this one is coming your way YouTube. And Sachin Kumar and Akhil, the two bowlers, who rolled the wrist over the ball, and it was majestic spell from two lads. 2 overs from Sachin Kumar, and Akhil bowled other 2 overs, where we saw 2 of the batters going down, and Sachin Kumar also struck twice, getting rid of Adil Guldan, who was going all guns blazing. Akimir has got the ball, and he's going to operate. The experienced lad of Kishtwar Titans here. Titans, the unbeaten team of the tournament. Valley Stars, can they turn the table tonight? Soft hands, that's what you need at the moment. Just maneuver the gaps and look for runs. 1s and 2s are going to be crucial and important over here. Vast boundaries, bigger boundaries. You have to push for 1s and 2s, try to convert singles into doubles, build the partnership.
and try to build it brick by brick, step by step. While crowd is creating a kind of mess over here. Well, that isn't good at all. We call it disturbing scenes. These are the disturbing scenes coming your way. Well, it's 65 for 5. Akib again. And now the problem with the Gandarbal batters, they have decided to play that defensive cricket, Nazir. Well, it's a T20 cricket. It's all about enterprising. Yeah, I know you are 5 wickets down, but you need to rotate strike. Dot balls will definitely affect. दबाव आएगा अगर आप डॉट पे खेलेंगे, दबाव आएगा यहाँ पे आपको अभी भी। हालांकि 5 विकेट सुरक्षित है, क्षमता है। दानिश मुजफ्फर आपके पास है, वसीम रजा 2 अनुभवी खिलाड़ी, आजिम राथर, नदीम डार आने वाले बल्लेबाजों में, तो विकल्प आपके पास बल्लेबाजी में है। पर यहाँ से ये जो सत्र रहने वाला, बड़ा क्रूशियल सत्र रहने वाला है, क्योंकि 11 से 15 तक आप किस प्रकार से पारी को चलाते हैं। या सिंगल मिलेगा, तिरछे बल्ले के साथ हल्का सा फंबल और रन पूरा कर लिया। 1 रन और आएगा खाते में। वैली स्टार्स गांधरबल 66 पे 5। 12वां ओवर और साझेदारी की आवश्यकता, वो पार्टनरशिप बिल्ड करनी जरूरी, क्योंकि दबाव में है टीम। 5 विकेट गंवाए हैं, यहाँ से आप एक साझेदारी निभाएं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करें। रोटेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और ऐसे में खराब गेंद का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रन संख्या समय 66, 5 विकेट के नुकसान पे डॉट के साथ यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। अंतिम गेंद का अभी भी आना बाकी। 11.5। वसीम रजा बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे दानिश मुजफ्फर। आकिब मीर का यह पहला ओवर, कैच की अपील, उंगली आसमान की तरफ और एक और विकेट का पतन। या वसीम रजा को भी वापस लौटना पड़ेगा। ये 12 ओवर समाप्त में 66 पे 6, आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुके हैं। दबाव लगातार वैली स्टार्स गांधरबल पे। Another one. Pirish to the pressure here. That too, former state player. Wasim Raza is on his way. Beautifully bowled. Akib Mir has the last laugh of a batter over there. What a strike and what a wicket. You got to admire. You got to admire. As a bowler, you will love to be part of that side. Getting rid of the batter like this. There is extra bounce on off it. Kiss to the blade. And Raza, without looking at the umpire, he knew that. It's come up the bat. He decided to walk back. He trudges back to it. Now the captain need to do something special here. As Zola gone, Guldan already back into the hut. Robbie can't flourish today. Wasn't his night. Wasn't his game. And others also failed in between. Now Danish Muzaffar and captain need to take that responsibility. One has to stand up, step up. On the other side, it's Kishtwar Titans. But just one punch away from sealing the deal. And captain comes out at number 8. Nadeem Dar. Now he has decided that it's my time to take the responsibility. They have Azim in the bank. They are Junaid and Samar to bat. And we can simply say that there is one batter. The proper batter you're going to rely on, that is Junaid. The Asif from Asif Saeed. And he's famously known as Junaid Bashir in Badgam. That's the only one I can rely on. And I'm going to believe that I'm going to use my money on it. I'm going to put my money on that man. And Azim can also launch big. Azim is a proper all-rounder, but I'm gonna put my money on one lad. In my words, I believe that you can rely on Asif Saeed, famously known as Junaid Bashir. And talking of the Azim Ratia, sometimes it just backfires his team, and then it's going to be the tail to come. So who will step up? Will this be the partnership? Can they change the complexion of the game over here? It's going to be Danish on strike to face the likes of Danish on strike. He will be facing the likes of Akil here. It's hit on the pad. Shot for LBW. All went up in appeal and is turned down. Danish survives. That brings captain on strike. Leg by signalled. An extra run added to the tally. It's 67 for 6. They are reeling at the moment. The jail at the moment. Someone need to come in and bail them out. It's a cagey time in the middle. Pressure and pressure, which is speaking volumes at the moment, louder at the moment. It's a kind of explosion when it comes to the pressure, which has affected the batters and the bat flow. There is no partnership coming, and nothing is going their way as we watch Akil again. The left-arm spinner has done really well, remarkably well, and what a night he's having, and what a game. That too in the finals, as a bowler, as a batter. When you do something special for your team, you're going to feel proud for that. And look how he's bowling tonight. It's been lovely and adorable. It's 67 on the board for the loss of 6.
They need a partnership that isn't going their way. Captain need to think over it, and even the management later on, they should sit together. And Mudassir Saab, the owner of the club, he has to think over it and look what needs to be done. I think that's still a great combination, evenly poised side. Sometimes it is an even day, and sometimes cricket plays tricks with you. It's a tricky game at times. We have seen that. The gentleman's game, the game of glorious uncertainties. Crowd enjoying it. Look at that one. How can you trust the bounce of the surface? It becomes just like that. The fifth day is going on. It's a test match, and you're here to say the test match. Look at the ball and the way the ball is getting the turn. The ball is getting that purchase out of the deck. You're going to go forward, and it's turning. It's playing that hide and seek with you. You have to find the ball properly. Get to the pitch of the ball. The other problem with that, getting to the pitch of the ball, is there is wicketkeeper up to the stumps. That's another problem. You have to keep everything in mind, and you have to adjust away and adapt to the conditions. And make good use of that, and you need to read it out of the hand or of the surface. Surface won't be easy, but better is to read it out of the hand. How he's releasing the ball. Wanted single, and it's denied. Directed need. Would have been a tight one. Danish Muzaffar would have been man in question over there. For the first time, day-night cricket is going on in Kishtwar. This is Chaugan, a meadow. A beautiful place, historic background. Now it's a cricketing hub, where action is coming your way and is unfolding in some style. Oh, he's lucky. He is lucky. Immensely lucky. To me, he survived scare. Nearly played on. It bounced and goes over the top of off. Score remains static. 67 with 6 wickets down. Pressure is mounting, counting. And it's taking full toll. In the meantime, Akhil again. Oh, look at that one. What's going on? This is called spinners are toying with the batters. They're calling the shot. And it's dominance, complete dominance, or the sheer dominance. 67 after 13, 6 wickets down, extras are 10. That means 57 coming up the bat. And including 10 extras, it's 67 on the board. You're watching JK Sports Time, Facebook, moreover YouTube. And wherever you are, stay there. We're here to tell you the pros and cons, the ebbs and flows are coming your way. And may I remind you once again, we're available in Play Store nowadays. You just go there and install the app and be the part of JK Sports Time. Those who are new on YouTube, you can subscribe and press the bell icon to receive the notifications, because we have a lot of cricket coming your way in coming weeks. It's going to be action-packed winter from Jammu and other parts of the country. So just brace yourselves and get ready. Cricket and cricket is coming with a cricket toss. It's a festive time in the winters. We're going to catch all the action and excitement, the buzz around the different venues in winters. Here is the fresh over. Akib Mir into the attack. In the air for a while. Doesn't bother to keep that one down. He's happy to make that one fly over the man at mid-on. One more run added. It's 68 for 6. Nasir Kumar, the man in red at form, got the beat in Navy CL yesterday, and it is 68 for 6 now. This is the 14th over. Look at that one. Lovely position from bat over there. Look at that elbow. 90 degree. And then dispatched it straight for a single. 69 for 6. Nazir partnership is master over here. That's key. That's going to keep their boat afloat. देखिए, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि साझेदारी ही आपके पास मात्र उपाय है, क्योंकि यहाँ से अभी भी करीब करीब 6-6.5 ओवर का आना बाकी है, क्योंकि 13.3 ओवर की गेंदबाजी, तो 6.3 ओवर का खेल बचा है, 70 पे 6। और यहाँ से आप साझेदारी बिल्ड करें, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करें गेंद के मेरिट के हिसाब से, क्योंकि इस विकेट पे बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है, खासकर स्पिनर्स के विरुद्ध। जिस प्रकार से प्रदर्शन, तेजी के साथ रन पूरा कर लिया, अच्छी दौड़, तालमेल का बेहतरीन परिचय, सिंगल। अब तक 4 सिंगल आ चुके हैं, 4 गेंदों से अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। 71 पे 6, 13.4 ओवर की गेंदबाजी वैली स्टार्स गांधरबल। अच्छा मुकाबला, एक शानदार मुकाबला। इस समय पर तो दबाव में टीम बैकफुट पर जाकर के तिरछे बल्ले के साथ दिशा देती थी, दौड़ पड़े थे रन के लिए, पर इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना ज़रूरी है, क्योंकि विकेट का जो व्यवहार है वो उस प्रकार का है नहीं। तो ऐसे में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को। नदीम डार और दानिश मुजफ्फर, 2 अनुभवी खिलाड़ी, वो पहले से स्ट्रोक के लिए को बैठ हो गए थे। लीजिए, विकेट दिया है उपहार के रूप में। क्या करना चाह रहे थे वहां पर, ये 7वां गंवाया है। वैली स्टार्स गांधरबल की टीम ने 7वां विकेट गंवाया मात्र 71 पे, और पूरी तरह से बल्लेबाजी फ्लॉप रही है, क्योंकि एक के बाद एक विकेट। और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ताश के पत्तों की तरह आज भी करती हुई नजर आई है बल्लेबाजी।
वैली स्टार्स गांधरबल के जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है चौगान क्रिकेट स्टेडियम किश्तवाड़ से, जहां ऐतिहासिक ये प्रतियोगिता किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का पहला सत्र खेला जा रहा है और इस समय वैली स्टार्स की टीम दबाव। Are we allowed to use Tuchel mein aaya? The pattern they're just following here. Nobody is able to resist. Nobody is able to adapt and apply himself over here. I think that is very sorry to say. I know that it's a tricky surface to bat on, but as a batter, you have got a lot of experience over the past couple of years. You're playing on turf wickets. Measured up cricket in the valley nowadays is going on turf wickets. So it was better to stick to the basics for a while. बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि अभी गेंदबाज ने गेंद रिलीज नहीं की थी, पहले से मन बना लिया था वो किस प्रकार का स्ट्रोक खेलेंगे, वो भी उस विकेट पे जहां स्पिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया है। तो यहाँ पे शॉट सिलेक्शन भी खराब रहा और पूरी तरह से हावी इस समय गेंदबाजी। 7 विकेट गंवा चुके हैं। आजिम राथर संभवतः नए बल्लेबाज आए हैं, अथवा जुनैद बशीर आए हैं संभवतः, और जुनैद बशीर भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पर इस दबाव में वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि रन संख्या मात्र 71 तक पहुंची है और अब 7 विकेट गंवा चुके हैं 14 ओवर में। तो 6 ओवर का खेल शेष पहली पारी में, पर किश्तवाड़ टाइटंस की टीम ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है वो बहुत बेहतर, लाजवाब प्रदर्शन रहा है, आक्रामक प्रदर्शन रहा है और आकर्षक प्रदर्शन कहना चाहिए, जिस प्रकार का स्पिन गेंदबाजी का जाल बुना है बल्लेबाजों के विरुद्ध। नेवर की शुरुआत, पारी का ये 15वां ओवर और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। सचिन कुमार संभवतः पहली गेंद, इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में नदीम डार ने खेला, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। जुनैद बशीर अब होंगे सामने और 1 रन के साथ रन संख्या 72। सचिन कुमार सिंह जो इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.1 ओवर, कोई मेडल नहीं, 15 रन और 2 विकेट। और विश्लेषण से आप देख लीजिए स्पिन गेंदबाजों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया इस विकेट पे। यह पहली बार इस फाइनल मुकाबले की, किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, एक तरफ वैली स्टार्स गांधरबल जो वर्तमान में बल्लेबाजी कर रही है और दूसरी तरफ किश्तवाड़ टाइटंस। 8 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अंततः यह फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ पहली पारी अब अंतिम चरण की ओर, पर आखिरी 3 विकेट सुरक्षित हैं 72 पे 7, 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये 15वां ओवर वर्तमान में दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ चौगान क्रिकेट स्टेडियम, करीब 20 से 25 हज़ार एक अनुमान के तहत क्षमता वाला ये स्टेडियम इस समय खचाखच भरा हुआ दर्शकों से। इस बार कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ, 1 रन के लिए दौड़ पड़े जुनैद बशीर, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़े। रन संख्या पहुंच गई 74 पे 7 विकेट के नुकसान पे, 74 पे 7, 74 पर 7। 14.2 वैली स्टार्स गांधरबल दबाव में, पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल और आखिरी गेंद तक आप अनुमान नहीं लगा सकते, आखिरी गेंद तक लड़ना जरूरी है। लोवा फुल टॉस ऑन साइड में खेले, एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े, पलट कर दूसरे रन के लिए और जुनैद बशीर और नदीम डार बहुत बेहतर बुद्धिमानी का परिचय दिया, 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार की क्रिकेट इस विकेट पे आपको खेलनी जरूरी है, जो शायद पिछले बल्लेबाजों ने गलती जरूर की है और उसका खमियाजा भी भुगता है। वैली स्टार गांधरबल ने मात्र 76 रन बने हैं 15वें ओवर में और 7 विकेट अब गंवा चुके हैं। तो यहाँ से प्रयास जरूरी है, वापसी जरूरी है। जुनैद ने सामने वही पास में खेल करके रन पूरा कर लिया। अच्छी रणनीति, बहुत बेहतर मानसिकता। सिंगल मिलता हुआ 77 पे 7, 14.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी। धन्यवाद राशिद मामा जो कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक सदस्य हैं और इस समय अपना कार्य निभाते हुए। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सामने है नदीम डार। देखिए बुद्धिमानी का परिचय, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करो और इस ओवर में 2 बार 1 को 2 में कन्वर्ट किया, उसके अलावा 3 सिंगल आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से, अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। और आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कीजिए जब बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हो, विकेट उस प्रकार का नहीं है, गेंदें उस प्रकार की आ नहीं रही हैं, तो आपको यहाँ उस चुनौती को स्वीकारना जरूरी है इन परिस्थितियों में। और परिस्थितियों के अनुकूल आप बल्लेबाजी करेंगे तो फिर शायद परिणाम आपके हित में आएगा। 78 पे 7, एक और सिंगल मिल जाएगा। जी नहीं, वापस दौड़ना पड़ेगा, वहां पर पास में खेल करके दौड़ पड़े थे पर सुरक्षित क्रीज में ओवर की हो गई समाप्ति। और इस प्रकार से 78, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 10 अतिरिक्त 5 ओवर का खेल पहली पारी में शेष। वैली स्टार गांधरबल के लिए 3 विकेट सुरक्षित। I think Nag will be pretty happy. The happier side, Kishtwar Titans at the moment in the middle. They're holding the upper hand. It is 78 for the loss of 7 wickets, just 3 wickets away. You got to admire the skills of bowlers. Praise is gallant for the side. Kishtwar Titans, a formidable force in the tournament. Winning streak continues. Unbeaten streak. And Jansa walks out on the field. The natural entertainer
He walks onto the field with a message. Nadeem Dar isn't happy. He screamed and he yelled at his partners over there. And Jansa walks out on the field having a word with Nadeem over there, telling him that it's your job, you need to take the responsibility now, as our side is in deep trouble, is in real trouble. They're in tatters at the moment, inshallah about us. But you got to admire, you got to give due credit to the bowling unit and the captain, the way he marshalled his troops and the way he used the ballers properly over here and making good use of the surface, which looked a belter prior to the toss. And throughout the game, it wasn't a difficult one, but the spinners, the way they used the magic in between that with that web and the magic around the batters, that was surprising. And it was outside syllabus, something coming batters' way. They couldn't resist tonight. And they followed the pattern. They kept falling and crumbling. And take a look again. Oh, this is the spectacle. Such a wonderful place. Twinkling Kishtwar. Lofty mountains in the lap of mountains. Such a beautiful meadow where cricket is going on. And it is the Kishtwar Premier League. First of its kind in the history of Kishtwar Valley. Such a wonderful spectacle. Cricket at its best. Thanks to the Anju Singh, Lalitji, Shagun Parihar, Sunil Sharma, and rest of the pack. Mahendraji, Rashid Mama, Faizan. All doing wonders. And our technical staff. We got Rajaji here in the comm box. The match referee has been always there to support the broadcasting team. This time one-handed shot. Well, spinners are getting difficult over here to face. It's a kind of Herculean task this evening, an uphill task to face the spinners. The spinners are making it difficult for the batters. And next one, right on money again. You got to hit the right lines and lengths. That's going to pay off. Resistance and perseverance is important. Unrelenting and unwavering passion. Oh, this time improvise. It's in the air. Will he get to the ball? No way. He survives. Trying to use the Douglas Marilier shot. Also known as Dilly Scoop, named after Tilakratne Dilshan, the cricketer from Sri Lanka. It was named after Dilshan later on, that Douglas Marilier shot of the Dilly Scoop. And nowadays, it's a conventional shot in shorter format. Batters love to break free and get it past the man at short fine down to the fine leg boundary. But this time not this time round. This time goes on to the back foot, then punches it away. He's so quick between the wickets. The agility is of next level. Running is very nice between the stumps. And he knows that how to run and how to run quick between the wickets. He's good at running. Talking of the Junaid Bashir. Driven straight. They're going to push for two. Oh, look at Junaid Bashir. He's so quick between the wickets, putting pressure on the field over there. That's another ploy you can use. And you can put pressure on the fielders on the opponent side under lights. Never easy to side the ball properly time and again. So that is going to help you. This time he lured him into the big shot. Long strike forward doesn't connect. And he obliged on that occasion but doesn't middle it properly. 16 done. 7 for 82. 10 extras. And this was just 4 runs coming. Another brilliant over from Akib Mir. Miser with the ball. Economic. He has bowled 3 overs, 2 for 10. Oh, look at his figures. 3 overs, 2 wickets and just 10 runs given away. The economy of Akib Mir is telling us how economic he is. Miser. Testing the batters. And is a difficult customer. He's making it difficult, tough for the batters. And batters are losing cool. We have seen that 7 of them succumb to the pressure. And these 2 batters need to bat till the very last moment. If they are to put 130, 140 on the board, these 2 need to bat till the very last moment. 10 and over will take them to 120, 125 around that. But they need to go big and they need to fire on all cylinders over here. What's going to come? Will spinners leak runs over here? Or the batters find a way to adjust? Who will win the final phase of 4 overs into the death overs here? Now slip headed for Junaid. First ball. That's high up in the air. That's gone all the way.
Lovely shot there. Are they talking of that ball? Dislodge the bail. Did it? But we don't have the UDRS available. Is it for the LBW? But why he referred? Why ask the TV umpire? The on-field call is important. We're talking of the bowled because there is nothing there. And I thought that is going there through their mind that did the bail came up the groove. But that's a strange from umpire over there. Why he referred it to the TV umpire? That is surprising element. Well, he looks okay now. All of a sudden, human errors are going to be there, Nazir. So you can't blame them because sometimes technology makes mistakes. So you got to admire the man. Despite the cold weather over there, it's biting, it's stingy at times. And he's doing wonders. But that was strange, Rajeji, believe me, that was strange. As he asked the TV umpire, look into this one, how can we help? We don't have that UDRS. We don't have the ball tracker, the sneaker in place. We'd definitely have to find where it was pitching. Was there any sort of deflection of the bat? Did it go past the bat? It's 88 for 7. This is the 17th over we are in. Runs is what they require at the moment. Junaid Bashir need to launch now. This time, will it run down? Will it run down to the fire like he gives the chase? Will it get to the ball? Will it get to the ball? And I think ball wins the race. And it's come up the pad. A leg by signalled just to Bukhara 4. Nonetheless, it hardly matters how they come. They need runs over here. And it's 92 for 7 now. Into the 90s. Team Valley Stars. Getting after a flyer. Then in the middle overs, they got caught. And they lost the way. They were looking in good control. They were running away with the scorecard at one stage. But that's the beauty of cricket. How things change drastically. Who would have thought that, oh, look. Spinners are toying really with the batters. Batters, they're unable to understand what to do. Should I go on to the front foot? And should I use the depth of the crease? What needs to be done? And even batters are surprised. They're caught in two minds. Yet again, two-minded. But no problem, he survives. This time, does well. Chipped it nicely. Could only fetch one there. Junaid. He is quick between the wickets. But the other important thing is you got to execute your plans to perfection. It is 17 done. 7 for 94. Kishtwar Premier League Season 1. It's the last game underway. Fight for the title. The title clash is underway. Was there a last ball? No, I think one ball is going to come. That was the second last ball of an over. Again, a defensive shot. 17 overs done. 7 for 93. This was 11 coming. Lot bat over. If we talk of the previous one, there were just 4 there. In this over, we saw 11 runs coming. आखिरी 3 ओवर का खेल शेष और कोशिश जरूर होगी और खाते में और इस प्रकार से 100 रन पूरे होते हुए 18वें ओवर में वैली स्टार्स गांधरबल के 100 रन 7 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी 114 प्रोजेक्टेड स्कोर और स्ट्रोक बेहतर है कनेक्शन सही है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर है चौका मिल जाएगा जस्ट बोकारा चौका 4 और जोड़ लीजिए खाते में 104 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर्स में आपको इस प्रकार की बल्लेबाजी और नदीम डार में वो क्षमता है जुनैद बशीर में वो क्षमता है और इस क्षमता को आज यहाँ पे इस्तेमाल करना जरूरी क्योंकि इन परिस्थितियों में इस बड़े मुकाबले में इस बड़े स्तर पे आपको परफॉर्म करना जरूरी और वह जानते हैं नदीम डार किस प्रकार से प्रदर्शन करना है आके मीर के विरोध एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक है एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ पलट कर दूसरे रन के लिए पर नहीं वापस लौटना पड़ेगा केवल 1 रन आएगा 1 रन और खाते में 105 पे 7 17.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है अंतिम गेंद का आना बाकी जुनैद बशीर ने 18 बनाए 13 के दूसरे नदीम डार हैं 12 पे 17 के दूसरे जुनैद सामने 105 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम गेंद का आना बाकी इस बार बैकफुट पर जाकर के अच्छा शॉट है खूबसूरत स्ट्रोक है और गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए एक और जैस बोखारा चौका अंतिम गेंद पर आ गया चौका ओवर की हो गई समाप्ति 109 18 के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 16 अतिरिक्त रन आए हैं पर यह रन संख्या में वृद्धि 2 ओवर का खेल और हमने जिक्र किया था कि अगले 3 ओवर में आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 30 और जोड़ लेंगे तो फिर 120 122 तक पहुंच पाएंगे और निश्चित तौर पे वो लक्ष्य रखना जरूरी है कोशिश जरूर अगले 2 ओवर्स में आप करीब 20 रन और जोड़ लें क्योंकि
इस समय 18 ओवर की गेंदबाजी में 109 रन बने, तो 130 तक आप पहुंच सकते हैं। और फिर दूसरी पारी में विकेट थोड़ा मुश्किल जरूर है। आप बेहतर गेंदबाजी करें, आप छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल करें, वो विकल्प आपके पास है, उन विकल्पों का इस्तेमाल करें। एक चुनौती रहेगी, एक संघर्ष जरूर रहेगा, ये फाइनल मुकाबला है, दबाव जरूर रहेगा दूसरी पारी में। 109, 18 ओवर समाप्त, 7 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है, देखना होगा इन बचे हुए 2 ओवर्स में। काफी मुश्किल और संघर्षपूर्ण ये स्थिति रह सकती है दूसरी पारी में भी, क्योंकि विकेट उतना बेहतर नहीं है। नए गेंदबाज और देखना होगा नदीम डर सामने, और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या ऋतिक का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी अन्य गेंदबाज का। नए गेंदबाज ऋतिक सिंह दूसरे स्पेल में करेंगे गेंदबाजी। ये पारी का होगा 19वां ओवर, 18 के बाद 109 पे 7, और आप 120 130 इस विकेट पे खड़ा कीजिए, और फिर दूसरी पारी में एक चुनौती जरूर रहने वाली इस विकेट पे। जी हाँ बिल्कुल, और स्पिन गेंदबाजों का बहुत बेहतर योगदान रहने वाला है दूसरी पारी में। आप सही टप्पे पे, आप सही एरिया में गेंदबाजी करें दूसरी पारी में, तो आप एक चुनौती दे सकते हैं बल्लेबाजों को। फिलहाल ऋतिक सिंह नए ओवर की शुरुआत, बैकफुट पर जाकर के ऑन साइड में 1 रन के लिए तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े और सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और 110 पे 7, 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 19वां ओवर। भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध, किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। एक अच्छा मुकाबला, एक शानदार मुकाबला। ऋतिक बाएं हाथ से, हाँ जुनैद बशीर, और पहले से जगह बना करके वो स्ट्रोक के लिए कमेंट हो गए थे, पर वापस लौटे ऋतिक सिंह। और इस प्रकार के पल जरूर देखने को मिलते हैं क्रिकेट के इस खेल में। T20 की अगर हम बात करें, एक बार फिर जगह बना करके उस क्षेत्र में निकालना चाहते थे, पर गेंद ऑफ साइड में चली गई। रन तो जरूर मिला लेग बाई के रूप में, 1 रन और आएगा खाते में। नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 1 रन और खाते में, 111, 7 विकेट के नुकसान पे 19वें ओवर में। अरे एक शानदार मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, 111, 7 विकेट के नुकसान पे। और देखना होगा 19वां ओवर। और यहाँ पे अच्छा शॉट है नदीम का, पीछे जहांगीर लोन तैनात हैं, ओ दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे। और एक बार फिर टीवी अंपायर को रेफर किया गया है, वो दूसरे रन के प्रयास में, नजदीकी मामला हो सकता था। जुनैद वापस लौटे जरूर, पर देखना होगा सुरक्षित हैं अथवा नहीं। बड़ी विकेट हो सकती है टीम के लिए, देखा जाए काफी नजदीकी मामला। हर नजदीकी मामला है, और आउट करार दिया जाएगा अथवा नहीं, थर्ड अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। और क्या जुनैद बशीर को यहां वापस लौटना पड़ेगा? जी हां, वापस लौटना पड़ेगा। रन आउट के रूप में विकेट मिला है जुनैद का, और एक और विकेट का प्रदर्शन यहां पे शानदार और बेहतरीन। एक अच्छी साझेदारी निभा रहे थे, पर एक आग्रता भंग हुई और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दूसरे रन के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे जुनैद बशीर। एक और विकेट गिरा, 8वां गंवाया। 112, 18.3 ओवर की गेंदबाजी। और देखना होगा क्या प्रयास रहेगा यहां पे। और ऐसे में देखा जाए तो अब आजिम राथर आए हैं संभवतः नए बल्लेबाज नंबर 10 पे, उसके बाद फिर समर का आना बाकी। स्पिन गेंदबाजी विकल्प आपके पास हैं, आजिम राथर, समर, उसके अलावा नदीम डार अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। सबको बेहतर टप्पे पे गेंदबाजी करनी जरूरी दूसरी पारी में, सही एरियाज में गेंदबाजी करनी स्पिन गेंदबाजों को, खासकर इस विकेट पे दूसरी पारी में, तो एक चुनौती रह सकती है। फिर यहाँ इन अंतिम 2 बल्लेबाजों को जो बची हुई कुछ गेंदें हैं, क्योंकि 3 गेंदें इस ओवर में, उसके बाद अगला ओवर, तो 9 मात्र गेंदें बची हैं फाइनल मुकाबले की पहली पारी में, और कम से कम अब 10 से 15 रन और जोड़ लीजिए, 120 125 अवश्य। अब वहां तक पहुंचिए जरूर। एक सम्मानजनक लक्ष्य हम कह सकते हैं इस विकेट का जो स्वभाव है, जो परिस्थितियां हैं। फिलहाल आजिम राथर बाएं हाथ के बल्लेबाज, और पिछले मुकाबले में सहयोग किया था नदीम डार का उस महत्वपूर्ण स्थिति में, और यहां पर भी उनके बल्ले से उनकी टीम चाहेगी कि कुछ रन जरूर आए अंत में। ऋतिक अगली गेंद लेकर के 112 पे 8, 19वां ओवर, 112। और देखना होगा कि भारी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध है। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का यह फाइनल मुकाबला
पहली पारी इस समय चल रही है और पहली पारी अब समापन की ओर, समाप्ति की ओर, क्योंकि मात्र 9 गेंदें पहली पारी में बची हैं और 2 विकेट सुरक्षित है। आजिम है सामने ऋतिक सिंह के। आज बार क्रीज से एक कदम आगे निकाला था, स्वीप मारना चाहते थे, सफलता नहीं मिली और गेंद वाहिद तेली के दस्ताने में डॉट के साथ संतुष्ट। 112 पे 8, 18.4। इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं, उसके अलावा एक विकेट भी आया है, पर ये बड़ा आया है, ये मैदान से बाहर जाएगा। जस्ट बुखारा छक्का, आजिम राथिर के बल्ले से निकलने वाला छक्का, ये सोने पे सुहागा है वैली स्टार्स गांधरबल के लिए। 118 पे 8, एक रन का महत्व होगा इस मैच में और काफी महत्वपूर्ण स्थिति है। आजिम राथिर के बल्ले से अंत में 10-20 रन आ गए तो निश्चित तौर पे टीम चाहेगी कि वो सुरक्षित है। हालांकि पहली पारी की हम बात करें, इस विकेट की परिस्थितियों की हम बात करें, पर दूसरी पारी में किस प्रकार का व्यवधान रहेगा विकेट का, बल्लेबाजों का किस प्रकार का रोल रहेगा, वो अलग बात है। पर यहाँ 118 8 विकेट के नुकसान पर इस बार ऑन साइड में 1 रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ। फील्डर उस ओर आ रहे हैं, पलट कर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और ये डायरेक्ट हिट लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, पर बहुत बेहतर रणनीति और तालमेल का बेहतर परिचय नदीम डार और आजिम राथिर ने 2 ओवर खाते में। अब 1 को 2 में कन्वर्ट करें, यह आवश्यकता है इस समय टीम को। और वैली स्टार्स गांधरबल 120 तक पहुंच चुके हैं और यहां ओवर की भी समाप्ति 19 समाप्त। 120 8 विकेट के नुकसान पर पहली पारी और अंतिम ओवर विवरण के लिए मनावा तनवीर। Last three overs gone for 38, and I mentioned in between that you can't rely on Azim Ratia for too long or for so long. But today, Azim on a very first ball, he sent it all the way packing into the crowd rack for 6. And talking about that lad, he can use the long handle. He's a good hitter of cricket ball. But talking about the major context of the game, in the longer run of the game, when you're 7 or 8 down and you have to bat it out or to battle it out for the next 3-4 overs, you can't rely on time and again on Azim. You can't put that sort of pressure on Azim. Azim loves to bat with absolute freedom, and he loves to bat when the stage is set so that he can just exploit the conditions. It's a different stage here, but still he has done well with the bat. 125, last over is coming up. The final over of inning number 1. Who's going to bowl the final over? Looks like Nag is gearing up. Yes, Nag is going to bowl that. I don't think Nag, it's Nasir. Is it Ishtiyaq Rasul or Nasir Rasul? We'll have to wait and watch. So that's Ishtiyaq Rasul to bowl. And he has put on that different clothing today. And sometimes you put on that sweater and it becomes difficult to sight it and observe him properly. So it gets difficult to say that whether it's Nag or someone else. But this time round, my colleague Sahil helped me out here. He told me that it's Nag now. He has taken off that kind of a hat we use in winters over here, or the one which is woven, and we love to put it on head so that it keeps our head warm. Here is the next one. Oh, look at that one. That was the extra bounce. The one that kept low, the next one, it kicked. And now Nadeem is having a press and inspecting that place. How did that kicked off the surface? It jumped. It erased, so 2 dots. Normally we have seen Nadeem hitting the ball deep, long and wide, but this time round unable to lay bat onto the ball. So 2 dots, crucial, precious, important dot balls here. Will Nadeem break free? Will he lay bat onto this one? This time punched it nicely down the ground. Gets 4 for that. Just Bukhara for that. Needed. They needed that boundary badly. And he dispatched it straight down the ground. Look at the power he generates. He is the powerhouse when it comes to the generating the power. He energized that hit straight down the ground. And nobody could stop the ball. And no chance for the man at long off and long on. Here is the ball number 4. This time again hitting it straight down the ground. But this time there is production. There is fielder. Is he going to go back for the second? Yes, with these. It's 126 with 2 balls remaining. Valley Stars Gaunderbal put to test today by Kishtwar Titans. In the batting phase, we have seen bowlers enjoying the conditions over here. They exploited it. And batters failed in between in middle overs. One-handed shot. Unable to read it. It was a slow one. Attempted slow, but they're going to push for 2 here. Azim wanted just single. But Nadeem is back for the second with ease. It's 128 for 8. The last ball of inning is coming up. The last ball of inning number 1. 128. 4, 132. 6, 134.
what he's going to do now. Has now tried the lower bouncer. And that back of the end slurver. What is in store now? A pacey one. And wicketkeeper lost control over the ball. Nearly made mess of that. Are they going to push for two? Just a single of the final ball by signal. 129. 130 is going to be the target for Kishtwar Titans to lift to the title. We shall be back with the chase. Till then, take care, viewers. Assalamu alaikum and fi amanillah.
अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का दूसरी पारी प्रारंभ होते हुए। और ऐसे में स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब और ऑफिशियल फेसबुक के माध्यम से दूसरी पारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित। शुरुआत होने जा रही है दूसरी पारी की। 130 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए दूसरी पारी में। और किश्तवाड़ टाइटंस के दो प्रारंभिक बल्लेबाज इश्तियाक रसूल और उनके साथ नासिर बशीर, कुमार के नाम से लोकप्रिय और इश्तियाक रसूल नाग के नाम से लोकप्रिय। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। शुरुआत होने जा रही है गेंदबाजी की। क्या समर से शुरुआत होगी या फिर आजिम रातर से, ये देखना होगा। एक अच्छा मुकाबला रह सकता है, कांटे की टक्कर का ये मुकाबला रह सकता है, क्योंकि विकेट उतना आसान नहीं है। पर पहले पावर प्ले में आप किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे और किस प्रकार से आप शुरुआत देंगे, ये देखने वाली बात होगी। विकेट थोड़ा मुश्किल जरूर दिखा है, खासकर स्पिन गेंदबाजों का। दूसरी पारी शुरुआत होती हुई और पहली गेंद लेकर के उमर लेफ्टी से शुरुआत और वह नाग के बल्ले से शुरुआत और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एजाज बुखारा चौका। अब तेज गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे तो फिर परिणाम कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जस्ट बुखारा और खाता खुला यहाँ किश्तवाड़ टाइटंस का 4 बगैर नुकसान के। भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। शुरुआत दूसरी पारी की, वो भी चौके से। इश्तियाक रसूल ने 4 बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर उमर लेफ्टी से शुरुआत करवाई है गेंदबाजी में। और सामने इश्तियाक रसूल एक चौका लगा चुके हैं सामने सीधे बल्ले से। राइट आर्म, अच्छी गेंद थी, गति से फेंकी हुई गेंद। ऑफ साइड में ट्राई किया, एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और सिंगल मिलता हुआ 1 रन और यहाँ पर स्ट्राइक होगी नासिर कुमार के पास। 5 बगैर नुकसान के 130, 20 ओवर में 130 रन चाहिए। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का पहला खिताब अपने नाम करने के लिए किश्तवाड़ टाइटंस को। वैली स्टार्स गांधरबल के विरुद्ध। कुमार सामने, उमर लेफ्टी। अगली गेंद लेकर के, अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतर गेंद। ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी रहती, हल्का सा उछाल था। सीधे बल्ले से सम्मानजनक रूप से खेलना चाहते थे, सफल हुए नहीं। और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। दानिश मुजफ्फर जो कि विकेट कीपर हैं, काफ़ी दूर खड़े हैं। ये देखते हैं कि उमर लेफ्टी के पास गति बहुत बढ़िया है और उस गति का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, पर गति के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए शुरुआत में। अच्छी गेंद थी ऑफ साइड में, सिंगल के लिए दौड़े जरूर थे पर नाग ने मना किया। वापस सुरक्षित क्रीज में बगैर किसी रन के 5 बगैर नुकसान के पहला ओवर। राजे 129 रन बने थे 8 विकेट पे। 130 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला। एक और बेहतर गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, एक और बढ़िया गेंद। उमर लेफ्टी की ये क्षमता है, उस सही दिशा और लंबाई के साथ एक बार लय में आ गए तो फिर बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। पर यह स्पिन गेंदबाजों का हमने रोल पिछली पारी में देखा, बहुत बढ़िया रहा। और शायद उस विकल्प पर जरूर जाएंगे। आजिम रातर अथवा समर को जरूर चुनेंगे अगले ओवर में, शायद ऐसा मानना है। फील्डिंग कमाल के, लाजवाब फील्डिंग वहां पर दानिश मुजफ्फर के। और निश्चित तौर पे ये कुछ रन जरूर बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वैली स्टार्स गांधरबल दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रही है। 130 तक पहुंचना है। 1 ओवर की गेंदबाजी, 5 बगैर नुकसान के। वैली स्टार्स गांधरबल ने प्रारंभ की है दूसरी पारी। और एक अच्छा मुकाबला, क्योंकि आपको शुरुआत बहुत बेहतर चाहिए। पावर प्ले में आपको विकेट सुरक्षित रखने जरूरी, अगर किश्तवाड़ टाइटंस की बात करें। और वहीं पे वैली स्टार्स गांधरबल की कोशिश जरूर होगी विकेट तलाशे जाएं और पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 विकेट प्राप्त करें, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य है नहीं। और ये देखते हुए कि बल्लेबाजी बहुत बेहतर है किश्तवाड़ टाइटंस के पास, जहां शुरुआत में नासिर कुमार और उनके साथ इश्तियाक रसूल, वाहिद अली आपके पास है, जहांगीर लोन, आकिब मीर। तो बल्लेबाजी में दम कम है, बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, उसको बहुत ज़रूरी है। और उसका आप किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे, उस बल्लेबाजी का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उस बल्लेबाजी को किस प्रकार से गेंदबाज भेद पाएंगे, ये चुनौती रहने वाली है नदीम डार और उसकी टीम के लिए। दूसरे छोर से अब देखना होगा वसीम रजा का इस्तेमाल। एक और बेहतरीन स्पिन गेंदबाज वसीम रजा, आजिम रातर और समर, ये 3 विकल्प आपके पास, और उसके अलावा नदीम डार भी। तो गेंदबाजी में विकल्प हैं आपके पास, पर बेहतर तरीके से उस गेंदबाजी का इस्तेमाल करना जरूरी। यहाँ कप्तान को एक बुद्धिमानी का परिचय करना है और आप किस प्रकार से स्पेल्स में इस्तेमाल करेंगे गेंदबाजों को, ये देखने वाली बात होगी। वसीम रजा, नए ओवर की शुरुआत, नाग का प्रिय स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर,
जस्ट बुखारा छक्का। अब कहां करेंगे नाग को गेंदबाजी, ये उनका रंग है, ये खेलने का अंदाज है इस बल्लेबाज का। जस्ट बुखारा छक्का, दोहरे अंकों में रन संख्या 11। मात्र 1.1 ओवर की गेंदबाजी, रजा ने शुरुआत की गेंदबाजी की। नाग की रेंज में आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुश्किल होगा, और वो भी शुरुआती ओवर्स में जहां पावर प्ले ऑन है और फील्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन है, उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे यहाँ पे नाग। वे चाहते हैं तेज शुरुआत मिले तो फिर उस लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। फिलहाल सिंगल मिल जाएगा और नासिर कुमार सामने होंगे, 1 रन और खाते में। 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 12 बगैर नुकसान के, दूसरा ओवर। नासिर कुमार सामने, वसीम रजा बाएं हाथ से, एक अनुभवी गेंदबाज। इस बार कुमार की पारी, लीजिए सीधे डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। दूसरा छक्का उस क्षेत्र में, जस्ट बुखारा। पहले नाग ने फिर कुमार ने, ये प्रहार देखने को मिलेंगे आज की रात्रि। ये फाइनल मुकाबला किश्तवाड़ प्रीमियर लीग 2025 पहला एडिशन, ऐतिहासिक क्षण है, कीमती मान रचा है अंजू सिंह और उसकी पूरी टीम ने इस क्षेत्र में। टर्फ पे ये टूर्नामेंट पहली बार चौगान क्रिकेट स्टेडियम में, और जहां वैली स्टार्स गांधरबल और किश्तवाड़ टाइटंस के बीच ये फाइनल भिड़ंते समय चलते हुए रजा दबाव में 2 छक्के उनके विरुद्ध आ चुके हैं। इस बार एक कदम आगे निकाला कि इनकी पिच तक पहुंचे, बैट और पैड मिलाकर के बल्ले के बीचों बीच टकराने का प्रयास। नाग आए, कुछ बातचीत उनके साथ कर रहे हैं कि आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करना है, अतिरिक्त जोखिम से बचना जरूरी है। यहाँ पे बुद्धिमानी का परिचय करना, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी जरूरी। 18 1.4 ओवर की गेंदबाजी में दोनों तेज तरार बल्लेबाज हैं। इनका खेलने का अलग प्रकार का अंदाज है, वो अंदाज दिखा है इस फाइनल मुकाबले में, इस पारी में, जहां वो चेज कर रहे हैं 130। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों के साथ लपेट करके ऑन साइड में खेले, सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। 1 रन और आएगा, 19 रन संख्या। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद का आना बाकी। इश्तियाक रसूल 12 4 गेंदों से 300 के स्ट्राइक रेट से, और 7 गेंदों से 7, नासिर कुमार 100 के स्ट्राइक रेट से। तो आप कल्पना कर सकते हैं वो पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण, पावर प्ले में कम से कम विकेट प्राप्त करना जरूरी। और बेहतर शानदार फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में रजा की, थ्रू किया विकेट कीपर के पास, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर की हो गई समाप्ति। 2 समाप्त 19 बगैर नुकसान के किश्तवाड़ टाइटंस 130 के जवाब में। Wasim Raza, the former state player. Well, my brother from Sheikh Brothers here in the comment box talking about that he has got the experience, played for the state in the past. Well, it reminds me of one of the incident from domestic circuit where he ran Gautam Gambhir, where he caught Gautam Gambhir short of his ground, and Gautam was surprised. Later on, he had a chat with someone from Jammu and Kashmir side. Who was that fielder? And somebody threw out it was Wasim Raza. He said, reflexes of highest level this guy possess. And that was Raza on the final ball, was top of the ball. What could have been more than one. And limit is the scoring down to 19 for none after 2 overs. Over number 3. Hasim has got the ball. No more pace from other end. It spins straight away. Goes deep in crease. Nasir Kumar, and he's got Ishtiaq Rasul, South Kashmir sensation, and Nasir Bashir Kumar, a wonderful player, batting with a shade below 100 at the moment, on to 7 of 8. He's going to take his time. Anything short, anything off track, he's going to punish you. That's a beauty again. Coming into the right hand, full of on, testing Nasir here. Will Nasir resist, or is he going to attack? Attack is the best form of defense. What will he do? Let's find it out. But I believe they want to attack the bowlers here. They know that each and every run will count, is important. You got to lower the pace, shorten the length to keep that Nasir Kumar blade quit over here. It's 19 without loss in the 3rd over. You're watching JK Sports Time, Facebook more over YouTube. As we watch Azim again. And that's the beauty, and that is the beauty of surface, to be precise, or the precise. And you can't trust the bounce of the surface. Sometimes it stops, it holds, and sometimes it gets space, or the pacey of the surface. And there is the extra bounce. And it nearly caught him in 2 minds, and somehow shouldering his arms are left alone to wicketkeeper. So no problem in the end. It is 19 for none.
Another dot delivery. It's dot here and dot there. Dots and dots. Will he make it? 6 dots on the trot. The last ball is going to be important one. Is it going to be a Madden ever coming up? And that's going to be first of its kind from Valley Stars in this game. Here is Azim one last time in the server. This time good looking shot. Could be tight. But no problem at all. Unscathed. One more run added 20 to end the over number 3. Just a single off it, Nazir. Good over this. In the context of the game, when we talk of the two batters, they were just going after the balls. But this over we're seeing lot of discipline in the bowling department, keeping Nasir Kumar under check. Tighten at the nose, tightening screws. You got to admire the bowler. अच्छा ओवर है और बेहतर गेंदबाजी, वो भी ऐसे समय में जब 2 ओवर में 19 रन आए थे. 2 छक्के, एक नासिर कुमार के बल्ले से और एक रसूल के बल्ले से. लेकिन उसके बाद अगला ओवर जहां 1 ही रन, तो कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि दोनों छोर से अब स्पिन आक्रमण ज़रूरी है. अरे चाहेंगे कप्तान वैली स्टार्स गांदरबल के कि आप स्पिन गेंदबाजी पे ज़्यादा निर्भर रहें. इस विकेट पे स्पिन गेंदबाजों ने अच्छा खासा प्रभावित किया है पिछले पारी में. अरे आप स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण दोनों छोर से करें तो फिर बात बनने वाली है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी की बहुत आसान है नहीं बल्लेबाजी करना. और पिछले ओवर में भी देखा. फिर एक बार फिर उमर लेफ्टी के पास गए हैं और कप्तान के इरादे कुछ अलग प्रकार के. अब उमर लेफ्टी का चुनाव एक बार फिर, हालांकि वो बेहतर गेंदबाज हैं. तो जब आप तेज़ गेंदबाज आपके कोई ख़ास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं तो फिर आपको ज़रूरी है स्पिन आक्रमण आप लेकर के आएँ. फिलहाल 110 रन अभी भी चाहिए 102 गेंदों से. 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौथा ओवर. और ऐसे में देखना होगा उमर लेफ्टी एक बार फिर करेंगे गेंदबाजी. एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, एक शानदार मुकाबला इस समय. नासिर बशीर होंगे सामने. जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब ये लाइव पर्सन आप तक पहुंचा रहा है. लाभा पंजाब और अपना कार्य करते हुए, और उसके अलावा विवेक और साथ में जॉन और उनके साथ उनकी पूरी टीम अपना दायित्व निभाती है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी धन्यवाद. और इस प्रकार का टूर्नामेंट लेकर के आए. फिलहाल चौथा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है. कुमार है सामने. उमर लेफ्टी पहली गेंद लेकर के, उनका दूसरा ओवर. अच्छा स्ट्रोक, बेहतर स्ट्रोक, पीछे फील्डर. शानदार फील्डिंग वहाँ पे, कमाल की फील्डिंग नदीम डार द्वारा. और निश्चित तौर पे कुछ रन जरूर बचाया अपने लिए और अपनी टीम के लिए. एक रन जरूर आया वहाँ पर कुमार के बल्ले से. 21 बगैर नुकसान के. तेज़ गेंदबाज कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और उनके विरुद्ध लगातार स्ट्रोक खेले हैं. पर आजिम रातर ने अच्छा खासा प्रभाव, वो पूरी तरह से क्रिकेट की भाषा में कहना चाहिए कि बांध के रखा था. उस ओवर में मात्र एक सिंगल आया था, वो भी अंतिम गेंद पर आजिम रातर द्वारा. तो स्पिन गेंदबाजी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस विकेट पे. और इस बार ऑन साइड में गई है. पीछे फील्डर हैं तैनात. 1 रन दूसरे की मांग पर कुमार ने वापस भेजा इश्तियाक रसूल को और 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज. 22 बगैर नुकसान के चौथे ओवर में विकेट की तलाश यहाँ पे. 108 रन दूर है उमर लेफ्टी का दूसरा ओवर और अभी तक 1.2 ओवर में 7 रन दिए उमर लेफ्टी ने. सामने नासिर कुमार हैं जो विस्फोटक बल्लेबाज है. इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं. आप उनकी रेंज में गेंदबाजी करेंगे तो फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर दिखेगी. थोड़ा शिकंजा कसना ज़रूरी है. एक सटीक लेंथ पे गेंदबाजी करनी ज़रूरी. उमर लेफ्टी एक बेहतरीन ऑलराउंडर जहां तक वैली स्टार्स गांदरबल की टीम का सवाल है. 129 बने थे पिछली पारी में 20 ओवर में. 130 का जो विजयी लक्ष्य है इस फाइनल मुकाबले में 22 बना लिए हैं. बड़ी सहजता के साथ 1 रन तेजी के साथ पलट कर वहां पे 2 खिलाड़ियों के बीच फंबल हुआ, आपस का टकराव हुआ और नतीजा यहाँ पे 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन और जब आपके सामने लक्ष्य छोटा हो तो फिर इस प्रकार की फील्डिंग की गुंजाइश नहीं रहती है. आपको एफर्ट लगाने ज़रूरी है फील्ड में. ये अलग बात है कि कड़ाके की ठंड है इस सर्दी के मौसम में, आसान है नहीं. पर प्रशंसा करनी होगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ऑर्गेनाइजिंग टीम की. अंजू सिंह और उसकी पूरी जो टीम है जो अपना कार्य निभाते हुए, जिनका कार्य जो दिया गया उसको बेहतर तरीके से निभाया है और सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट को यहाँ तक पहुँचाया है. ये फाइनल मुकाबला है और आज की रात्रि इस फाइनल मुकाबले का समापन होगा. ये ट्रॉफी किसके पाले में जाएगी, ज़रा देर करना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है. यहाँ पे थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी ज़रूरी है और उसके बाद परिणाम आपके हित में आएगा.
24 बगैर नुकसान के। 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदों का आना बाकी। उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुमार सामने। और नासिर कुमार ने अभी तक 11 रन बनाए हैं 16 गेंदों से। अच्छी बल्लेबाजी की है और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था। गति के साथ फेंकी हुई ये गेंद पूरी तरह से वहां पर बीट किया बल्लेबाज नासिर कुमार को, और बाकी का काम पूरा किया दानिश मुजफ्फर ने, जो कि विकेट कीपर है। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 24-3.5। अंतिम गेंद का आना बाकी। बड़ा संघर्षपूर्ण ये मुकाबला और भारी मात्रा में दर्शक। एक अनुमान कहते हैं जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि करीब करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास ये दर्शक उपलब्ध है यहाँ पे। जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां पे दर्शक है। ये शॉट बेहतर है पर नदीम डार सामने, रन नहीं आएगा यहाँ पर। ओवर से आ गए 4। यहाँ 4 ओवर की समाप्ति 24 बगैर नुकसान के, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से, पर विकेट सुरक्षित। पावर प्ले में बेहतर बल्लेबाजी। Keeping wickets intact. Nice observation. There's Sheikh Nazir in the com box. That's going to be an important aspect of the game. They do have 4 wickets. They do all the wickets in Kitty. Sorry, there's just 4 overs done. Talking about the number of overs done, 4, and it's 24. But credit to the bowling unit too. Now they pull things back to some extent. Not in control, but to some extent. As the first over we saw, it was all guns blazing. But the next 2 was from spin. It has been quiet. And the batters are unable to launch big and go big. They are not being denied. That's the beauty from the spinners, and they need to keep attacking the batters here. Make good use of the ball and the conditions over here. Can they exploit it? Will they make a good use of that surface which looks too pacey at times? Here is Azim. Now cuts that one and finds his field. And only you got to beat the man. You're going to pick more than one because it's mandatory power play on, restrictions are on. You're watching JK Sports and Face more over YouTube. It's the final match of KPL Kishtwar Premier League Season 1. First up its kind under lights. This time Nog throws his bat at it. No connection. Danish Muzaffar whiffed off the bails. But there is no problem at all. He's got that foot grounded, so no problem at all. Took the bails up, telling Nog, you can't take undue risk here. And the bails coming up the groove in no time. Spectacular game underway. Huge crowd. Jam-packed stadium. This time goes deep in crease and beats the man. And picks up boundary just to Bukhara and collect his boundary over there. And look at that transfer weight from front foot to the back foot, from back foot to the front foot. That's the beauty. Looks like a flexible batter in the middle. And you need that flexibility. You got to crouch low at times, bend your back, bend your knees. But this time around it was a nice transfer weight. That's the beauty of Nag, and he's got that foot moment. And the bat speed is really nice. He's batting with the high back lift. This time picks it up. And it's in the gap again. Second boundary of the over. Just to Bukhara for back-to-back boundaries. And that was half tracker. That was a short one. Easy pickings. It gone wrong. It went wrong for Asim Rathra over there. And take a look again. Watch that excitement from, and the joy and the jubilation from spectators over there around the boundary cushion. They're delighted. And they're getting their money's worth here at Chogan. This time, as we put off the bails, TV umpire is asked to assist. We'll have to wait and watch. And we'll have to wait and watch. Shot for stumping.
And it was zoomed. And when they zoom it, when the TV umpire asked the official over here to look into this one deep, and it looked like that it isn't properly grounded. That's what TV umpire believe. That's what I reckon from TV umpire. So it's wicket number 1 down here. And Nog is given out. He's on his way. He isn't happy at all, but he has to walk back because umpire's call is the final. Because TV umpire was asked to zoom it, looking from different angles. Then a good call from umpire, I believe, from TV umpire, because he inspected it, going through different angles and watching it keenly. And that was good call in the end. So it's wicket number 1 down. He's on his way back to pavilion. So who's going to come in at number 3? Rajaji, the TV umpire over here. He looked it in, navigated through this, and he was watching keenly. And you know that it's umpire's call, and he has that ability, and is given that power to make the call and decision. But coming back to the game now, as Nog is given out in the form of stump. And he was stumped by Danish Muzaffar. Reflexes of brilliant level. That was the brilliance of wicketkeeper. Otherwise, it wasn't easy. In no time, in nick of a time, he took up the bails, dislodged the bails. Bails coming out of the groove, and stumps were broken. So up goes the finger, and he's asked to walk away. Now the new man walks in at number 3. Akhil in at number 3. The number 3 comes in at, it's number 3. It's Akhil in at 3. Now down to the number 2 and number 3. Here is Azim Rathra again to newcomer. Gets hit on the pad. Shot for LBW, and umpire is unmoved. And Azim knew that it's come off the bat, so he decided against appeal, not going to appeal anymore. He knew that, and so no problem. It's 5 done, 1 for 30, 2. 5 is done, 1 for 32, and the knock departs for Kishtwar Titans in the chase of 130. He needed to bat till the very last moment, because Nog is a destructive batter. How to demolish the attack, how to take on and put pressure on the bowlers. Who knows better than Nog? The one man who's known as South Kashmir Sensation, is a sensational all-rounder batter. An attacking cricketer in the power plays. He's going to make the ball fly. Even today, he announced his arrival. Doesn't last long in the end, he's sent packing. So wicket down here in the form of stumping. He was stumped by Danish Muzaffar. We are into the over number 6, the last of mandatory power play. It's 32 on the board, below 100 needed, 98 away, Nazir. 98 from 15 overs, 90 balls, 98 away. And if Valley Stars are to win this game, they need 2 or 3 wickets in quick succession away, in a kind of a cluster. बिल्कुल विकेट ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर विकेट लगातार अंतराल पे प्राप्त करते हैं तो फिर परिणाम आपके हित में आ सकता है। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुकाबला जीत सकते, पर एक संघर्ष, और दर्शक उसी मुद्रा में बैठे हुए एक संघर्ष दिखे, कोई एकतरफा मुकाबला ना हो। देखना होगा आगे किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल कुमार सामने, उमर लेफ्टी एक बार फिर गेंदबाजी में, लीजिए सामने की ओर खेला है, लॉन्ग ऑफ पे चौका, जस्ट बोखाना। 4 और खाते में 32 से बढ़कर 36, 1 विकेट के नुकसान पे। 5.1 ओवर की गेंदबाजी, और उमर लेफ्टी का ये तीसरा ओवर, 2.1 ओवर, 13 रन। पहले विकेट की तलाश है उमर लेफ्टी को। आजिम रतर ने कुछ गेंदबाजी की है। अखिल और नासिर कुमार इस समय पेश मैदान में। नाग का विकेट ज़रूर मिला है।
पर यहाँ एक और विकेट की तलाश जल्द से जल्द चाहेगी। पटाखों की आवाज़ें गूंजती हुई पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का ये पहला एडिशन। हाँ, इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ सरकते हुई गेंद, अच्छी खासी स्विंग होती हुई और सीधे विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के 36 पे 1। ज़रूरी है कि आपको एक साझेदारी निभानी है और वहीं पे गेंदबाजों का प्रयास कम से कम एक विकेट ज़रूर तलाशना, सेट होने का अवसर नहीं देना है बल्लेबाजों। और कुमार क्योंकि काफ़ी तेज़ खेलते हैं, आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करते हैं, उनका विकेट पे बने रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है टीम के लिए। यहाँ सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि, 37 पे 1। ये 6ठे ओवर की गेंदबाजी, पावर प्ले ऑन है पर भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। क्रिकेट के प्रेमी, चाहने वाले दीवाने इस क्रिकेट फाइनल को एंजॉय कर रहे हैं। ये चौगान क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट का मेला सजा हुआ है जो 15 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और आज 29 नवंबर को इसका समापन होने जा रहा है। जेके स्पोर्ट्स टाइम। काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन है यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी। निवेदन इनसे ज़रूर होगा कि कृपया करके थोड़ा ये इस स्थान को खाली करें क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है। ओ, बोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये विकेट मिली है उमर लेफ्टी को और दर्शकों का शोर देख लीजिए यहाँ पे। एक बार फिर वो 7वें आसमान पे दिखाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है और इस बात का परिचय दे रहा है जो समर्थक है वैली स्टार्स गांधरबल के कि आपको विकेट लेने जरूरी है। कुछ भी संभव है, ये क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल है। बराबर The game of glorious uncertainties, the game and the T20 format. The fortunes can swing wildly to and fro, back and forth. So you can't say anything. You can't rule out the fact that this game is all over. No way. It's still on, it's chase on, it's game on, pretty on here at Chaugan. And what a place to be, Nazir. It's game on, chase on here at Chaugan. Lovely scenes here. The vibe is telling you that, believe me, I feel I'm lost somewhere in the cricketing hub. It is in Mumbai, believe me. It is Chaugan, Kishtwar, not Mumbai and the Brisbane or the Wankhede. Looking at the crowd and the love for the game, Kishtwar is coming live tonight. It's twinkling Kishtwar, shining bright. The land of sapphire and saffron is hosting cricket's first ever day-night tournament. And it is Aleem in. Is it Aleem? Yes. And Mohammad Aleem is in at number 4. As they're 2 down, Akhil sent packing. Nag given out stump, and he wasn't happy with that call from umpire. But you know that we need to respect the umpire's decision. That's all I can say. Nag batted really like a champion even today, and that's his natural style. That's his conventional style, how to go after the bowlers. He's just trying to play that dominant cricket. He tries to dominate the other side, the opponent side. Jammu and Kashmir police personnel over here, Jamba spy, but they're unable to control the mob over here. The spectators and the flow. Not just a spectator, it's a huge crowd. It's around more than 20k. As we watch the fresh a ball coming up in the power play. That is the last of mandatory power play. Aleem to face Umar. Umar lefty. Here is Umar lefty. Aleem gets beaten. And there is 20k crowd behind each and every ball. Look at the scenes. Believe me, it's unbelievable. It's breathtaking here at Chaugan. And each and every ball is being praised. And every shot is being cheered. And that is telling us the intensity of the game. It's high voltage encounter unfolding here at once a lush green meadow, now a cricketing hub. The action hub of Kishtwar is hosting the final. One last time in this over. On strike is Aleem. Aleem cuts well, cuts hard, gets 4 for that. And that was brought to you by Just Bukhara. Power play comes to an end with a delightful boundary of the batter Mohammad Aleem. Nazir, that was a lovely timing, riding on the bounce, and who knows better than Aleem how to dispatch it. And that's how you have to dispatch the ball when there is extra bounce. Wow, with an offer, you're gonna come back and then slap it like that over in the Seba. बहुत बेहतर ऑन द राइस खेले
और खूबसूरत वो शॉट था, अलीम के बल्ले से चौका मिला। 4 और खाते में 41। एक बार फिर गई है हवा में। इस बार कुमार के बल्ले से यह प्रहार आया है और 6 रन और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होते हुए कमाल की बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज और करीब करीब 20,000 के आसपास दर्शक, वो शोर सुनाई देता हुआ हर गेंद का, हर स्ट्रोक का, हर छक्के का, हर चौके का आनंद लेते हुए दर्शक कुमार सामने। ऐसे में आजिम राठिया अगली गेंद देकर के बाएं हाथ से इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 48, 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। 130 रन चाहिए इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए किश्तवाड़ टाइटंस की टीम को। संघर्ष चल रहा है, 2 विकेट जरूर गंवाए हैं नाग और अखिल आउट होकर बीच मैदान से जा चुके हैं और इस समय बीच मैदान में जो नाबाद बल्लेबाज है नासिर बशीर और मोहम्मद अलीम, और देखना होगा अलीम ने एक अच्छा शॉट खेला था, कुमार ने कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी की है और कुमार इस समय 23 पे नाबाद है। अलीम ने 4 रन बनाए 2 गेंदों से, अच्छी गेंद थी। एक और बेहतर गेंद आजिम राठिया की, 7वां ओवर, 6.3 के बाद 48, 48 for 2, 7वां ओवर। हर देखना होगा कि मुश्किल चुनौतियां जरूर है पर यहां लगातार अंतराल पे आपको विकेट प्राप्त करने जरूरी है। मात्र एक उपाय है पिच क्यूरेटर आके भाई, हर इस समय बीच मैदान में और पूरी टीम जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो अपना पूरा दायित्व उन्होंने निभाया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, अंजू सिंह और उनकी पूरी टीम, और प्रशंसा करनी होगी इस टीम की। इस कड़कती ठंड में भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग और योगदान दिया। फिलहाल अलीम सामने 48 पे 2, 6.3 ओवर की गेंदबाजी, 3 गेंदें बची इस ओवर में। अलीम सामने आजिम राठिया के। देखिए क्या बुद्धिमानी क्रिकेटर हैं, गैप में खेला है, एक सिंगल आ जाएगा, किस जल्दबाजी में नहीं है, जानते हैं सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है, दबाव बनाना है विपक्ष पे, उसमें सफलता भी मिली है अभी तक। 49 पे 2, 7वां ओवर। 130 उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, पटाखों की आवाज़ें और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल इस समय इस फाइनल मुकाबले में। अरे थोड़ा अंतर जरूर दिखाया मनवर पिछली पारी की अगर हम बात करें, वहां पर लगातार अंतराल पे आपने विकेट गंवाए थे, वो गेंद की पिच तक पहुंच नहीं रहे थे और फुटवर्क का बेहतर इस्तेमाल हो नहीं रहा था और स्पिन आक्रमण बहुत बढ़िया था। पर यहाँ देखिए आप गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, खराब गेंदों का बेहतर इस्तेमाल, गैप में गेंद को देख रहे हैं, तो ये अंतर दिखा है पहली पारी और दूसरी पारी में। Yeah, exactly. Agree with your statement. There is a huge difference. Contrasting. Well, what we saw in the first inning, that was totally different. And they go on to that defensive mood in between, and they lost the ploy in that way. In trying to defend the balls and negotiate. While negotiating, they lost the plot and they lost the way. But in the second innings, runs are coming. And runs keep coming thick and fast. And that makes it different. And that's the difference. It's 50 up on the board after 7 overs with just 2 wickets down. Akhil and the other one to go is Nag, who was given out. Stump was stumped by Danish Muzaffar. And this is JK Sports Time Facebook, moreover YouTube, bringing you the ball-by-ball commentary of grand finale from Chaugan, Kishtwar. People from different walks of life, elders, younger generation, women over here, and girl is also watching the game of cricket. And even our old is gold, old man over here. And one of such Chacha is right in front of our com box, which makes it delightful
And that tells us how big this game is and what kind of love it brings in, the vibe it creates, the spirit it has shown, and it's really amazing. This is going to be over number 8. We are in. Who's going to bowl the 8th over? Those who are new on JK Sports Time YouTube channel, you can subscribe and press the bell icon. You can also install our app, which is available in Play Store nowadays. JK Sports Time at your disposal. Keep going, keep coming. Hop tabs this way, and do subscribe to our channel on YouTube and be the part of JK Sports Time. Together, we conquer. Together, we rise. We achieve, and let's do it together. Here is Summer for the first time. This is over number 8. We are in. Summer. That one stays low, touch low. He was trying to punch it away. Nasir Kumar, he is a superb hitter of cricket ball. He strikes it as clean as a whistle. On strike is going to be Nasir Kumar again. He's going to face the likes of Summer, who's bowling at the moment. The boy from Punjab. Look at that. The bat speed he generates. The pace he gets. It's a pacey hit out towards the backward point. And fielder does well. He cuts it up, but not before the two batters. Crossed over for 2 more runs with that brace. It's 52. Keep watching JK Sports Time YouTube channel, dear beloved listeners and viewers. Thanks a million and billion. We are bringing you the live vibes. We are the storytellers here in the comment box, and be the part of JK Sports Time. In the meantime, here is Summer again. Summer, oh, good delivery. Defensive shot, and it's through for a quick single. With the shot, is off for a quick walk. Good running between the wickets. 1 more run added to the tally, and it is 53 for the loss of 2. This is the 8th over we are in. Well, I really respect every listener and spectator over here, but you should also respect the game of cricket, because game is above all. You should know that. It's the cricket which brought you guys and we guys here. So understand this. Have some sense and let the sense prevail. But unfortunately, we didn't learn any lesson since 27th of October 1947 and till the date. And it is 53 for 2, unfortunately to say. And sometimes I lose cool because of these incidents. And what else you can do? You have to take that harsh dig at times. But you need to respect the game which has given us the respect and which has brought we guys to this part of the world to be part of these wonderful vibes. Here is Summer again, who's bowling really well at the moment. This time dig out nicely, dispatched straight down the ground, down towards long on. And there is man stationed who does well, who cuts it off. 1 more run added to the tally, 2 for 54. This is the 8th over we are in, and you are watching JK Sports Time, the Valley's household channel. This time round in Kishtwar, bringing you this ball by ball commentary of final match to you away, to your safer zones, to your houses and other offices. And it is 54 for 2. We are into the 8th over. Hope spectators will respect the game. And we are here to praise their resilience, praise their patience for the game and the respect. Because it's our duty too to respect them, because they're watching us, they're keeping us on our toes, and they're working as a kind of force. They love to, and we love to continue. They're adding a kind of fuel to our tanks. But we should all respect the game of cricket, because cricket is the gentleman's game. It connects us hearts. It builds that kind of trust. It's bridging between different nations, different religions, and even the people from different walks of life. And there is a shot for stumping. Will it be referred? They're asking the Skellig umpire to refer it, and he has refused. He believes that the foot is well grounded, so he's not going to ask the TV umpire. So you don't need any more assistance from. Well, the Skellig umpire believes that the foot is grounded. He's not going to ask. We'll have to wait and watch. They're just forcing him over there. Are they going to refer now? Will it be referred? There is a utter drama in the middle again. The drama begins over there. Now what he has decided. Well, Nazir, interesting to see when Skellig umpire refused to take it to the TV umpire, and he was forced to ask the TV umpire assist. Now what should be done under certain circumstances? मनोज भाई, आपके पास 2 स्पष्ट अंपायर हैं, ऑफिशियल हैं आपके पास, मैच रेफरी आपके पास, और क्रिकेट के नियम है, आपको नियम का पालन हर हाल में करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि आप नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्रिकेट, ये महानता है इस क्रिकेट की, ये खूबसूरती है इस क्रिकेट ने। इतिहास गवाह है, क्रिकेट की खूबसूरती हमेशा सर्वोच्च रही है। क्रिकेट जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। ऐसे में सुरक्षित अभी भी बीच मैदान में, हर ऐसे में देखना होगा, अभी भी सुरक्षित।
Assalamu alaikum, and luckily we're back again. There was a kind of a drama in the middle, an utter drama. It lasted for 15 or 20 minutes, and we lost special or the invaluable 20 minutes to that drama in the middle. Now it's back to the action again. Nasir Kumar is in the middle, and who's going to join Nasir in the middle? Who will join Nasir Kumar in the middle to make those remaining runs for Shubham Shan's Kishtwar Titans tonight here at Chaugan? Adil Wani is in a number 4. Wani need to take the responsibility. He has to be responsible. Oh, how he will bat now. The interesting passage of play really waits all of us. As they are now 2 down, the second one to go is Adil Rishi. Both the batters given out in the form of stump tonight. They were both stumped, number 1 and number 3. And now it's down to Nasir Kumar, a special character when it comes to the batting. The skills he possesses are very special and of high quality. He's got the rare skill set. Everyone can't hit the ball like Nasir Kumar. And you can't keep going on each and every ball. It's hard to make the ball fly all the time. And this is Kishtwar Premier League Season 1, the final match underway. On strike is going to be Nasir Kumar. Kumar is getting ready to face the likes of Raza over there. Raza has got the ball. Raza to continue. Crowd is getting out of control over here. And you know that whenever there is a huge crowd, it becomes tough for the administration, organizers to handle the crowd. And this time he closes the bat pace. Oh, could be tight. Could have been third one in that trap over there. But he's lucky to survive Adil Wani. That was needless from Adil Wani and his partner Nasir Kumar, who pushed hard for that single in the end. Made it look easy, but that wasn't easy. Would have been Adil Wani man in question as he was running down to the danger end. Shai came in, but off target. That saved Adil Wani, the partner of Nasir, in the middle. They are 3 for 56. We are into the 9th over. Wasim Raza. He has bowled 1.1, none for 14. 13 off his first over. And that was expensive. He's got a slip in place for Adil Wani. And that's the beauty of Wani. Long stride forward. He's stretching well here. He lunges forward. He comes forward. Pushes it with the soft hands. No problem over there. A dot delivery. The next one beautifully bowled. Excellent delivery. Close at the bat face. Cuts him into half. And there are some of the areas, some of the patches, which are the areas of concern for the batters. You can't go onto the back foot time and again to press it away. And he was caught in 2 minds. Dropping his wrist over there, shouldering arms in the end. Oh, this time he's right behind and blocks it away. Now Raza is finding that rhythm. He's looking forward. He's on a roll here. He wants to get rid of the batter as soon as possible. Will he be able to pick one here? And Adil Wani, that's in the air. Will he be taken? No problem at all. He survives and gets away with that one in the end. And they're running back for the third. Could be tight. And we'll have to wait and watch. TV umpire is asked to look into this one. Wait and watch. Wait and watch. Oh, Nasir Kumar isn't happy with his partner over there. Crackers are going on. TV umpire will have a look into this one. You got to give credit to the wicketkeeper Danish Muzaffar. This wonderful work over there.
So Nasir Kumar is gone here. Listening to the noise. It's noisy, it's hostile. And the red light is blown. A red light comes off. And oh, look what's going on in the middle. They rucks and roar. And they're enchanting, they're sloganeering at the moment. Rubber whistles pressed into service. And it's all about that the boy from Gandarbal who's selling those rubber whistles is also known as Pompo Boy of Valley. And oh, look at the colorful crackers going off at the moment. They are delighted, they're celebrating. It's just that celebration going on, the festive time here in this part of the world. It's a festival come cricket tournament. All happening. It's all happening here at this beautiful venue of Chaugan Sports Field here in Kishtwar Valley. Who comes out to bat? Akib Miran is in at number 5. Nasir Kumar run out. Adil Wani sold his partner there. That was needless from Adil Wani. The decision to push for the third, I don't think that was available. And Adil Wani was lucky to survive scare. He was in all sorts of bother. As the ball blown up in the air. And Jan Sab is another misery for the two officials over there. Now someone is trying to take care of John Sab and telling him that it's the time for the action in the middle. John Sab is going off the field. Luckily that's another good move. Thank you very much, brother. Thanks a lot. As they are now 3 down. It's 4 down. Sorry, correction comes in. Thank you very much, Sahil Bhai, for letting me know that they are now 4 down. Not just 3, they are 4 down. Now it's 58 on the board. Here is in another big name, experienced lad. He's of great quality. What can he do now? Akib Mir is in to face the likes of Wasim Raza. He's got to slip in place. First ball for Akib. Akib has that carried? No, doesn't. And look at the sportsmanship from Wasim Raza. Look at, you got to praise the boy and the honesty of highest level. He says it didn't carry. He puts in a dive, but he says it's up the bounce. So there you got to admire the skills, the honesty, the great sportsmanship he has shown over there. Raza is Raza from Heart of Steel, one of the brilliant cricketers that Valley has ever produced. And look at that sportsmanship over there. He said, after the completion we shall meet. And talking about Nazir, that sportsmanship and that honesty of highest level, told him that didn't carry. ये महान बल्लेबाज की महानता रहती है, ये उनकी कला होती है, ये उनकी खूबसूरती रहती है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कैच नहीं है और सुरक्षित क्रीज में है आकिब। फिलहाल मुकाबला बड़ा संघर्षपूर्ण है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जिक्र करें तो 4 विकेट टीम गंवा चुकी है। और ऐसे में बीच मैदान में आकिब मीर और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी जो बीच मैदान में आदिल वानी बने हुए हैं, वो दोनों सुरक्षित क्रीज में हैं। हालांकि आदिल वानी क्रीज पर होंगे, स्ट्राइक लेने की तैयारी में होंगे और नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे आकिब मीर। ये फाइनल मुकाबला संघर्षपूर्ण चलता हुआ नजर आ रहा है। 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। यार अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी इस मुकाबले में। नए ओवर की शुरुआत, इस बार अच्छा स्ट्रोक था पर मिड ऑफ खिलाड़ी नदीम डार ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ये 10वां ओवर प्रारंभ संभवतः हो चुका है। 58 4 विकेट के नुकसान पर संघर्ष जारी इस फाइनल मुकाबले में। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला और डेड बॉल करा दी जाएगी। और एक जो लाइट टावर है वो सामने वो ऑफ हो चुका है और ऐसे में थोड़ी सी विलंबता एक बार फिर। तो काफी उतार चढ़ाव दिखे हैं इस मैच में। दूसरा लाइट टावर भी ऑफ हो चुका है। अरे समस्या जरूर है। Because of huge crowd over here, I think we're experiencing those frequent cuts and the wire is cut somewhere. And once the wire is repaired, we shall be back. So till then, take care of yours. Assalamu alaikum and stay tuned to JK Sports Time. Don't go anywhere because we need to repair those wire cuts. Wire it is damaged. They need to look into this one, and W is here to take care of the wiring. And what is going to be the next update? You stay connected to
JK Sports Time. We shall be back shortly. Oh, Alhamdulillah, we're back again. Lights are on. There was a little cut, and WR done very good job. And it is going to be action time at the game time coming up your way because of that short break, a little pause in play, and we lost the lights in between. Finally, lights coming on. We lost the connection for a while, and Anju Singh is doing a great job. Look, he's on his toes right now again, and his team is there to support him. Well, it's never easy to host a tournament, Nazir, in Jammu and Kashmir with least resources available in place, because we don't have proper cricketing, that setup we call it. We don't have the proper stadiums over here, which are closed, where we have the seating arrangement, proper seating. Because of that, due to unavailability of stands around the stadium, these things are going to be often. And you're going to see these things, wire cuts, wire damaged. You know that our system runs on these wirings. It isn't wireless system at all. And in a proper stadium, you have the proper channel to take those wires in such a way so that there is no human intervention. It has a bypass way. So talking of this way, it's very much open vast field over here. Well, hope the administration will do something substantial in the coming years so that they build that kind of setup over here in the different parts of the Kashmir Valley, Jammu and Kashmir, including Ladakh, where we have a proper cricketing stadium with proper wiring, fencing around the center, and that seating arrangement, the capacity. Look, this has got a great capacity when it comes to the crowds, spectators and bystanders. They can come in and stay here. But when we talk of that, when the stands will be developed, it will look beautiful, it will look gorgeous, and we won't face these kind of power cuts or the wire cuts or the wire damages time and again. This only going to happen when you don't have the proper seating arrangement over here, when you don't have the proper wirings everywhere around the center. So these things are going to happen because people coming in, there is intervention all the time. Sometimes wire gets damaged. Well, back to the game again. Luckily, lights are on in full swing, and Chogan is witnessing a cracker of a night, humdinger of a contest, a match worthy of the final. That is in itself a lovely and a superb game of cricket. And there are 4 wickets down now, with 58 on the board into the 10th over. 130 is the target to win the game and to lift the title. Talking about the chief organizer, Anju Singh, isn't easy to host a tournament. He's burning his midnight oil even right now. He's on his toes. He has done very good job. Bravado and brave from our side. Yes, brother? देखिए मनवर, अगर क्षमता की बात करें, करीब 30,000 के आसपास लोग इस समय है इस चौगान क्रिकेट स्टेडियम में, और रिकॉर्ड तोड़ा है आज क्राउड ने करके थ्रू आउट द टूर्नामेंट सभी जो लोग हैं। और जी हाँ, बिल्कुल जिक्र करना चाहेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस मैदान पे आज जिस प्रकार से दर्शकों का सैलाब उमड़ आया है, तो निश्चित तौर पे ये अंजू सिंह को क्रेडिट जाता है, जिस प्रकार से उन्होंने क्रिकेट इतिहास को बदला है किश्तवाड़ में, और एक नया जन्म दिया इस क्षेत्र में कि आइए आप भी किश्तवाड़ में इन हंसी वादियों का नज़ारा आप क्रिकेट के साथ भी कर सकते हैं। अंजू जी, कुछ शब्द आपके जरूर लेना चाहिए। हेलो किश्तवाड़, मेरी सभी क्रिकेट लवर्स जो भी हैं और जो किश्तवाड़ निवासी हैं, मेरा उनको जय श्री राम
और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनको आदाब। क्रिकेट का मज़ा ले। क्रिकेट जो है वो खाली एक गेम है और किश्तवाड़ के आवाम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ इनका स्वागत भी करता हूं। किश्तवाड़ की जनता को अगर ये मैच, ये डे नाइट मैच जो है अगर नसीब हुए देखने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एलओपी साहब सुनील शर्मा जी उनकी वजह से है। और मैं शुक्रिया करता हूं एलओपी साहब का और अपनी बहन एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार का। और मैं शुक्रिया करता हूं उसी के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, जिन्होंने दिन रात करके इस ग्राउंड को मेंटेन करने में, इस टर्फ को बनाने में मेहनत की। और मैं सभी मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने जो आईना दिखाया है पूरे जम्मू कश्मीर को, और जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जो किश्तवाड़ की आन बान शान है, राजकुमार बुलट जी वो पधार चुके हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ राजकुमार बुलट जी के साथ जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी, जिन्होंने हमें अपने तन मन धन से सेवा की और दिन रात को हमारे साथ रहे, मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की तरफ से पूरे किश्तवाड़ का शुक्रिया करता हूं कि किश्तवाड़ का जो यूथ था, किश्तवाड़ के जो लोग थे, हमें हर एक बंदे ने अपना सहयोग दिया, साथ दिया। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। ये क्रिकेट जो है ये एक गेम है, ये एक मैसेज है एक ब्रदरहुड का पूरे किश्तवाड़ के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे भारत के अंदर। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, सीआरपीएफ का और म्युनिसिपैलिटी का और पीडीडी डिपार्टमेंट का। और लास्ट पे मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस ग्राउंड की आन बान शान बढ़ाई। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Anju Singh ji. Nazir, looks like a leader among the masses. Oh, wonderful words. Come on, buddy. Keep going. जिस प्रकार के उनके शब्द, और आशा करेंगे कि वह अगले जो हमारा भविष्य होगा और उसमें हमारे मंत्री भी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का हाव भाव है हमारे अंजू सिंह सैन जी का, और बहुत प्रभावित है, उनके शब्द जो हैं बहुत प्रभावी रहते हैं। और ऐसे में धन्यवाद करना चाहेंगे राजकुमार बुलट जी का भी, जो यहाँ पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, स्वागत कमेंट्री टीम द्वारा। लेकिन इस समय मुकाबला जो है संघर्षपूर्ण, आकिब मीर का विकेट गंवाया है, 5वां विकेट यहाँ पर गिरा है और वैली स्टार्स गांधरबल की टीम वापसी करती है इस मुकाबले में। Yeah, exactly. They're making way back into this one. And talking about that brilliant catch, absolute stunner. And it was an easy one. It's Akimir on his way, who was caught in the deep. Back to the game again. It was Anju Singh, the chief organizer, having few words with us here in the comm box, talking about the success of the league and the sport from every corner, every nook and corner, and the communal harmony here in this part of the world. Muslims, Hindu and other sects coming together, joining hands and hosted a wonderful league and making it one massive success in the end. And back to the game, 61 for 5 into the 10th over. Last ball of the 10th over coming up. Summer goes and bows. And a dot delivery, 10 the successful over, 10 done, halfway mark, 61 for 5, 59 more runs needed.
No, I don't think 59. More than that. 69 more runs needed from 60 balls to win this game. And talking about the game, Nazir, we were talking about the game of cricket in the first 20 years. The way game changed its complexion, its colors, that was strange. And even in the second innings, look, things are really changing again. There is a drastic change, abrupt change all of a sudden. And if Valley Stars put more breaks on the scoring rate, believe me, they can make a match out of it. देखिए इसमें कोई दौरा नहीं, मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि एक अच्छा मुकाबला है, कांटे की टक्कर का मुकाबला है, कुछ भी संभव है और अभी भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला इस समय चलता हुआ, ये कांटे की टक्कर किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला वर्तमान में। आदिल वानी सामने है। रन संख्या की बात करें तो लगातार यहाँ पर दबाव ज़रूर नज़र आ रहा है। एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतर मुकाबला, संघर्ष था इस मुकाबले में। वसीम रजा अब गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ से, पहली गेंद लेकर के आदिल वानी ने सम्मान दिया, एक कदम आगे निकाला, फ्रंट फुट पर जाकर के बैट और पैड में आकर के वापस खेला बॉलर के दिशा में बगैर किसी रन के। और काफ़ी ज़्यादा दर्शक आज आए हैं इस मैदान में। चौगान क्रिकेट स्टेडियम की बात करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अनुमान लगाया जा सकता था, मैं समझता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। और क्रिकेट के दर्शक, हमने पहले भी उनका स्वागत किया है, धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभारी पूरी कमेंट्री टीम हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, राजकुमार बुलेट जी यहाँ पे उपस्थित है। और किश्तवाड़ की अगर हम बात करें उन युवाओं के लिए और इस प्रकार का प्लेटफॉर्म लेकर के आना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। Great achievement, no doubt about that, Nazir. And it's a beautiful place, Chaugan. Once a meadow, now a cricketing hub. Full of inspiration, full of excitement. And that is joyous Kishtwar for you. And something special. Things are changing and Kishtwar is itself changing. Here is the next one. Plays it back along the track, non for runs, another dot delivery. These dots are going to be crucial and important. And Rajkumar Bulletji, one of the key members, backing Anju Singh in the tournament. Unless he wants something. And he's lucky. Was that a chance? There was an edge that gone down, should have been taken. Danish Muzaffar, who did really well over the past couple of hours, but this time round, that was an opportunity. Would have been 6th one in the kitty. And that to Adil Wani, such a big lad, such a big man. And he gets a lifeline. He's breathing. He's lucky. He's standing tall at the moment. The next one. It's a madden over from Wasim Raza. Now 54 balls, 69 more runs needed. इक्वेशन जो है, आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। विकेट 5 अभी भी हाथ में है, पर वैली स्टार्स गांधरबल की टीम यहां से शिकंजा कसने का प्रयास करेगी। वहीं पे रन बनाने जरूरी है क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस विकेट पे स्पिन गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण है और वो जाल बुना है और उस जाल को और मजबूत तरीके से बुनना जरूरी है। एक बेहतरीन और शानदार मुकाबला वर्तमान में किश्तवाड़ की बात करें, करीब 30,000 के आसपास दर्शक यहाँ उपलब्ध हैं इस खूबसूरत मैदान में और क्रिकेट का एक महासंग्राम बीच मैदान में। इस फाइनल मुकाबले की बात करें, वैली स्टार का टाकरा इस समय किश्तवाड़ टाइटंस के साथ। कौन होगा विजेता, किसके पक्ष में जाएगी ट्रॉफी, कुछ इंतजार के बाद निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। Well, we shall come to know surely. But at the moment, it's 54 balls and 69 more runs needed. The asking rate gone up to 7.67 and over. Not a big concern. And there are 5 wickets in kitty. Just need to stick to the basics and look for ones and twos. Well, they are 69 behind from 54 balls. JKP personnel is doing very good job. Jammu Kashmir Police ke Jamba Sipai. And it's 61 on the board with 5 wickets down. Here is the fresh over coming up. Sahil Shafi has got the ball in his hand. Will he make inroads over here? Tens of thousands here because of Anju Singh and rest of the members. And what an effort. Exemplary work done. First of its kind. Historic moment in the land of sapphire and saffron. In the lap of mountains. This is Chaugan for you. It is shining like sapphire at the moment. 61 for the loss of 5 as we watch Sahil. Goes and bows. Defensive shot comes into play. Good running between the wickets. Scamper through quickly. They need runs over here. Ones and twos will surely take the pressure off. Then they can go for the big shots. And bowlers can also make mistake in between. You have to toil hard and you have to dig deep. You got to bat outer skin and you need
thick skin over here at the moment to absorb the pressure and put on a show. Thank you very much, Rajkumarji, once again. What a name you got. And by the heart, you're really Rajkumar. 62 for 5. This is over number 12 we're in. And look at the manifolds. Jammu and Kashmir is changing itself, no doubt about that. The air is changing. The atmosphere is getting really nice. Oh, what a bit absolute blind. That just gone past to the man. And it's a boundary after ages. What could have been absolute stunner. Just Bukhara 4. In the air and over the man down to the boundary for 4. Lovely 4 coming. Much needed boundary to their boost. And this is surely going to help the batter to gain that confidence. Wasn't that far from a captain. Nadeem Dar over there would have been blind, would have been stunner, would have been catch up the tournament. And that could have really changed the complexion of the game. But you never know what's going to come. You are on the very next ball. This is cricket. And this is the game of highest uncertainty. The greatest uncertainties. And it's 66 for 5. Here is Sile again. And that's a good looking shot. In front of Scare on the off. And fielder does well. Oh, what a stop. It is Zolo puts in a die. What could have been 4? And he limits the scoring down to 1. And that's what they need at the moment. They need fielders on their toes. Fielders need to back the bowlers. Put brakes on the scoring rate. Dry up singles. And save boundaries here. 5 for 67. Sahil Shafi. He's in his very first over. In search of one here. And there is the celebration going on. We'll have to wait and watch. Is it report to TV umpire? And now the TV umpire is asked to assist, and Lalitji is here to take care of the rest. We're going to wait a while. And he's lucky to survive. Gets away with that one. Good call from Sunil. Lalit Sharmaji, who's the TV umpire right now. Lalitji has made his decision, which is quite crystal. 5 for 67. And the good thing about today's match is, look Nazir, different walks of life. Younger generation, old man over here. This Chachaji is here since ball 1. And showing that respect and love for the game. It's telling us that what we guys need. And those who are indulging in social evils, drug menace and other things, say bye-bye to drugs, say yes to healthy life, say yes to cricket, and be the part of these events. Defensive push, not for runs. It is a dot delivery. Score man static 67 for the loss of 5. One last time in this over. It's going to be Sahil to bowl. Rajkumar Bulletji in the com box. Over to you, Nazir. धन्यवाद। और मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है, हालांकि इस गेंद पर रन या ओवर की हो गई समाप्ति। यहाँ 67-12 के बाद 5 विकेट के नुकसान पर वैली स्टार्स गांधरबल के किश्तवाड़ टाइटंस ने 130 रन बनाने हैं इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। 48 गेंदें 8 ओवर में और 67 रन चाहिए जीत के लिए। 5 विकेट सुरक्षित हैं, तो एक अच्छा मुकाबला, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। यहाँ से विकेट चाहिए टीम वैली स्टार्स की, अगर हम बात करें उनको, उनके गेंदबाजों को, और वहीं पे दूसरे छोर से रनों की आवश्यकता। एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला, शानदार मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। हर निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो एक बेहतर मुकाबला। हालांकि हाल फिलहाल में जो क्रिकेट का क्रेज़ है बहुत सर चढ़ के बोला है। और वर्तमान में अगर हम बात करें, मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब ने फाइनल मुकाबला जीता था बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को हरा करके, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और इन परिस्थिति में उसी प्रकार का जो वहाँ के जो चीफ उनके करता धरता है टीम ऑनर जो है तजमुल साहब और खालिद भाई, तो उन्होंने एक बेहतर और सफलतापूर्वक जो स्टेप लिया उस टीम को सफल बनाने में। और आपने जिक्र किया था हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं, तो ये क्रिकेट के प्रति उत्साह सर चढ़ करके बोल रहा है। फिलहाल सामने वाले छोर से वसीम राजा नेवर की शुरुआत करते हुए ये गेंद इस बार आदिल वानी बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे और
और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और राजकुमार बुलेट जी जो कि इस समय कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हैं और उनका मानना है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है उनको 1000 रुपये की धनराशि जो है उनकी तरफ से दी जाएगी। और थैंक यू वेरी मच राजकुमार बुलेट जी और इस प्रकार से जो है हमें भी याद करने के लिए। और देखिए आपने जिक्र किया था कि यहाँ पे इतना सारा क्राउड है और मैं समझता हूँ ये किश्तवाड़ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आने वाले समय में भी हम आशा करेंगे कि इससे भी बेहतर क्रिकेट हो। फिलहाल जो मुकाबला वर्तमान में चल रहा है वो संघर्षपूर्ण होता जा रहा है, हर गेंद के साथ संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इस समय 67 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर की गेंदबाजी और काफी ज्यादा मैंने आपने भी जिक्र किया था डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, बहुत ज्यादा क्राउड है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया गया है। पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको आत्मविश्वास बरतना जरूरी है, बस कुछ कम समय रह गया है, प्रतीक्षाएं समाप्त होने जा रही हैं। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय किश्तवाड़ के इतिहास में पहली बार अंडर लाइट्स दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ ये चौगान क्रिकेट स्टेडियम अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात का ये परिचय देता हुआ कि क्रिकेट जम्मू कश्मीर के साथ साथ किश्तवाड़ की इन हसीन वादियों में भी संभव है और करके दिखाया है अंजू सेन और उसकी पूरी टीम को। और इस बार बड़ा स्ट्रोक अगेन सीधे वहां बाउंड्री लाइन से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। That's gone big, huge, long, and 6. And that's a biggie. What a show. Lovely timing, wonderful touch. And that's Adil Wani for you. 1K will be given away by Rajkumar Bulletji to the man of the tournament. And he's going to give away 5,000 cash award to the commentary team and the rest of the camera team over here. And that's quite some achievement, and that's a big award announced by Rajkumar Bulletji. It's 5 wickets down, 73 on the board. Here is the next one. Another good shot straight down the ground. Where is this one going? There is a man at long on station. Just a single, and with that single, there is addition 74 for 5. And talking Valley Star, they need a wicket over here. On the other side, batting side need a partnership. These two need to carry on and push further and forward. Keep going and keep rocking. Keep hitting on all cylinders here. Keep firing because the job isn't cut out. And that's what cricket is all about. Let's see which side will have the nerve. Tense it. And its suspense continues in the middle. It's tense situation over here for both the teams. The side which will have the nerve will go on to lift to the title for the first time here at Chaugan. What a place to be. LOP was here. Shagun Pariharji, she was also here and she graced the occasion. The MLA Kishtwar, a young laddie, this one. Where is this one going? And Summer does well. Summer does immensely well. Unbelievable stop. What could have been a boundary. And he limits the scoring down to a solitary single. Excellent stop. And those who are watching, is it a wide delivery? Was that a wide? Was that a wide, Sunilji? Lalitji, was that a wide? Yeah, that's a wide delivery too. So we didn't see that because of that huge crowd right in front of our comm box. We can't cite anything. We can't say anything. There is a huge distraction going on because of the bystanders over here. They're unable to understand what needs to be done. They're not able to respect the game. 76 for 5. Last ball of over number 13 is coming up. Here is Raza again. Raza, last ball of his spell. That's a big shot in the air. And that's done the distance. What a shot. Cracking blow. Adil Wani with that just Bukhara maximum. What a shot. Oh, remarkable. Oh, little back away. Then goes hard at it. It's gone flat. And it's gone many rows back for a maximum half a dozen. Celebrations are underway from both ends. Every run is being celebrated with great fervor and respect. Every fall of wicket is being cheered. And we have seen that from both ends. There is a huge fan base for both the teams. That's interesting, Nazir. Players from Kashmir Valley. But love in this part of the valley is of next level. They are being loud. They are being followed and celebrated here after each and every ball. With every passing ball, there is a next kind of excitement and joy in the middle. Jubilation is there around the center. And talking about the announcement from Rajkumar Bulletji that 1K will be given to the most valuable player of the tournament, and 5K is announced for this camera team over here. And even in the semi-finals, he given away a lot of money that day.
And it was just to inspire the young generation, be the part of cricket and join sport and make the country feel proud. And things are really changing, believe me. Across the valley, Jammu and Kashmir, across Jammu, Kashmir, even Ladakh, things are getting better. Well, thank you very much. 82 after 13 overs for the loss of 5. And talking about Wasim Raza is done with his quota. In the final over, Raza was attacked badly. And they took the attack on to Wasim Raza over there. Short pause in play. Thank you, Musaddiq and Bashir Saab, for your love and sport. They're loving the game of cricket. And looking at Bashir Saab and the white beard on his face, that is amazing. And it's the father and son over here. Wow. That's what cricket is all about, Nazir. Believe me, this is the game which unifies us, irrespective of caste, creed, color and religion. We are one. It's because of cricket. Muslims, Hindus, Christians and different cultures coming together. That's the beauty of gentleman's game. That's why the land of sapphire and saffron is hosting that festival. Thanks to the Anju Singh, Rajkumar Bulletti, LOP and others. A quality shot coming round the corner. What are they going to do on this one? Just a single. Then as you believe me, the excitement is of highest level, jubilation, joy. It is changing colors and it is changing entire Jammu and Kashmir. Thanks to these sponsors hosting such a wonderful tournament here. And Nazir, back to the game again. What a game of cricket. You can't say anything until the last ball is non-ball. Suspense continues. अगली गेंद लेकर के और इस बार हल्के हाथों के साथ उसको दिशा दे दी। एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि 84 पे 5। 84 पे 5 इसमें रन संख्या। और इसमें इक्वेशन मेरे स्कोर जानकारी देना चाहेंगे। 40 गेंदों से 46 रन चाहिए। 40 गेंदे 46 रन चाहिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जेके स्पोर्ट्स टाइम प्ले स्टोर में जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे सभी स्पॉन्सर्स का और अपने सभी व्यूवर्स का। स्पॉन्सर्स की बात करें, जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बाय रफीवानी, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा HND और वैली फ्रेश कोल्ड चेन। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने व्यूवर्स का, अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और श्रोताओं से क्षमा भी चाहेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं। इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, आसान नहीं है इस क्षेत्र में इस प्रकार से आप तक ये कमेंट्री पहुंचाना, पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सफलतापूर्वक बेहतर से बेहतर लाइव प्रसारण आप तक लेकर के पहुंचे। फिलहाल संघर्ष इस मुकाबले में पूरी तरह से एक छावनी बन चुका है। दर्शकों की छावनी इस समय देखने को मिल रही है इस मैदान में। फिलहाल समर गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने वाले चोट से उन्होंने अभी तक समर अथवा सचिन ये देखना होगा। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बेहतर स्ट्रोक है, पीछे फील्डर तैनात हैं। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल मिल जाएगा वहां पर अथवा रन संख्या में वृद्धि होती हुई 85 पे 5। 13.4 ओवर की गेंदबाजी, 45 चाहिए जीत के लिए। 38 गेंदों का आना बाकी। बीच मैदान में 2 बल्लेबाज, आदिल वानी 22 पे 21 गेंदों से और उनके अलावा जो है उनके साथ संभवतः सचिन कुमार जो कि 3 पे नाबाद हैं और गेंदबाजी समर के हाथ में। सामने होंगे आदिल वानी जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। 85 पे 5। 13.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी। अगली गेंद लेकर के गेंद
और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा सरकाव था। और आदिल वानी चाहते हैं कि एक बड़ा स्ट्रोक खेल करके थोड़ा सा दबाव बनाए समर पर, और उस पर उन्हें सफलता नहीं मिली और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। 85 पे 5, 13.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद का आना बाकी। आखिरी गेंद समर के इस ओवर की 14वां ओवर, 85 पे 5। इस बार आदिल वानी एक बार फिर अच्छी गेंद थी, बस स्ट्रोक खेला जरूर था, पीछे फील्डर है, थ्रो सीधा दानिश मुजफ्फर के पास पर वापस लौटना पड़ेगा। सुरक्षित ओवर समाप्त हुआ 85, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। तो अब 6 ओवर का खेल, 36 गेंदें, 45 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, कुछ भी संभव है मुकाबले में। That's a good partnership going on between Adil Wani and his partner over there. But you got to give due credit to Adil Wani, the way he decided to step up. It takes courage, it takes bravery, it takes bravado character to be there in the middle, to step up and facing all the rigors under the biting cold, and the conditions aren't good for the batting over here. But the batters did really well, and it's been Adil Wani once again. What a night he's having. And if they go on to win, you got to praise that young talent. He was praised by Chris Gale. If you remember a few weeks back, Gale told me in an interview, I was hosting Gale, and he told me that there is a boy in Kashmir who scored 100 in the tournament, and the way he paced the innings, the way he garnered everything, the way he dig deep, and he batted like a champion, scoring runs and scored 100 in that game. And here when they needed badly someone to step up, it was Adil Wani who said, yes sir, I'm here to do my job for my team. And he decided to stand up, and he stepped up without any fear of fall. He's standing very tall among all for his team. They are now 45 behind from 36 balls. If Valley Stars are to win this game, they need 2 more wickets here, and both the sad batters, at any cost, it will cost him an arm and a leg to get rid of the 2 men in the middle. Won't be easy. Crowd in good numbers, huge attendance, and it's 29th of November, a night to remember for ages to come in the history of Kishtwar Valley. And Anju Singh, the man, alongside Lalitji, Rajkumar Bullet, LOP, Shagun Parihar, Mahendra Singh, Faizan, Mama, all did really well, and Akib Curator, who prepared these beautiful 2 wickets for this event. And it's because of their hard work we are here to be part of such a wonderful league. We are part of this because of their hard work, and the first ball of the fresher is a dot delivery. Thank you for watching JK Sports Time. Thank you for opting for JK Sports Time. Hop to JK Sports Time Facebook and YouTube. Those who are new on YouTube, you can subscribe and press the bell icon and be the part of Tensor Chase here at the Center. The crunch game is underway, and these are going to be the crunchy moments. Here is the next one. What a hit. Lovely shot straight down the ground, and they're going to push for 2 here, and Adil Wani is ready to make it for the second. And he's so quick between the wickets. Good running there. And with that brace, it's 87 for 5, thanks to the chief organizer. Mr. Anju Singh is here. The man is backing this event. And in the meantime, here is Nadeem Dar again. Will captain do something special? They need a miracle. But things are getting little easy over here now. Looks like easy peasy. Chipped in with another single. Good shot there in front of Scare on the off. Another run taken. He's off for a quick walk. This is good cricket going on. But the noisy atmosphere over here. Noisy. It's hostile because of huge gathering. 20k. You can't keep anyone quiet over here tonight. It's all for that excitement. They're making that noise over here. Rucks and row, rumble, bumble. And nobody is ready to be humble over here. They're all jubilant and joyous at the moment. That's come up the inner side of the bat. It's going down to the backward of Scare area. And fielder does well. He covered all the ground to stop the ball and save 2 runs for his team. It's 90 on the board. They are 40 runs behind from 32 balls. Not a difficult task now. It's their game to lose with 5 wickets in kitty. They don't need to overhit anything. They don't need to force something over here to make it happen. I believe they're in with a chance now. But at one stage, yeah, they were in a difficult phase. And Gandarbal Valley Stars Gandarbal were cock a hoop at one stage. But now it's all about the batters who are dominating the show again.
That's what cricket is all about. Turning on its head, turning the table and changing its color like that of chameleon. And that's all going on here at the center. Thank you, Bashir Saab. 91 after 15. 5 wickets down. Extras were 3 all. Look at the discipline from Valley Stars. Just 3 extras. And 91 and 88 coming off the bat. And just 3 runs conceded in the form of extras. And the last over gone for 6 from Nadeem Dar, the captain, the skipper of Valley Stars. Mudassir Saab backing Valley Stars Ganderbal, young lad. He has launched an initiative that Valley Stars Ganderbal will continue its services in terms of cricket in the field of cricket, and it will engage the young generation from Kashmir Valley. And talking about the Kishtwar Titans, Shubham Shan has got a nice pack. All the players from Kashmir Valley, most of them from Kashmir, and today we saw 2 guys from other part of the country. That was the Sachin Kumar, one of them, and Akhil, another one added to the fold of their team. And back to the game again, it's 91. They are 39 behind from 30 balls. 39 needed of 30 balls. Summer to begin the fresh over. The boy is also coming from Punjab. What will he do? Are we in for a punch from Punjabi? Is he going to be that Punjabi Munda? They love to be possessive in the middle, to finish the game in no time. What will he do with the ball? It's 91 for 5. Reverse the distance. Doesn't get told. It's a dot delivery. And I think Adil Wani is now trying to be over smart there. I don't think this will work. It's better to stick to the basics. Don't risk your wicket. Don't be in a rush. You have your moments in the game. 91 for 5. 29 balls, 39 away. And he is delighted. What's going on? Is he clean bowled? Yes. He's on his way. And Adil Wani is on his way. All of a sudden, against the run of play, huge roar from the crowd. Danish Muzaffar and rest of the pack is delighted. They're in a hurdle. Crackers. The night of crackers. The cricket of highest level. Suspense continues. What a match. This isn't over yet. Ladies and gentlemen, listen in. Crackers going on. Poster boy walks out to middle. Jahangir Lone. Jahangir Lone comes out to bat. There is a message from a natural entertainer. I think he's challenging Jahangir Lone over there. These are strange scenes coming your way on your screen right now. May I remind you, JK Sports Time is available in Play Store nowadays. You can just go there and install the app and be the part of JK Sports Time. And thanks to the sponsor of JK Sports Time, I start with the Fashion Fista. Shining Star Pump or amateur multi-brand by Rafi Wanig. Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. HND Complete Kidswear near Netipura, Srinagar and Valley Fresh Cold Chan. And Just Bukhara is special and top of all. And in the meantime, it is 91 for 6. We are in over number 16. Ladies and gentlemen, wherever you are, stay there. We are here to bring you the ball by ball commentary from Chaugan of Kishtwar. Here is Summer again. Jahangir Lone on strike. Jack Lone to face the likes of Summer. Crowd on their toes, chanting Lone Lone. Here is Summer. And Jack Lone guided that one nicely in the gap. Down to the short third. He's on the way. He's off the mark straight away. And score propelled to 92 for 6. This is the 16th over we are in. Jahangir Lone on other end. On strike is going to be Sachin Kumar. A complete batter. Nice all-rounder. Outside playing for Shubham Shan's Kishtwar Titans team. Here is Summer. Sachin Kumar, the left hand on strike. It's lefty versus lefty. Diamond cut diamond. In the air. And there is a fumble. 2 run save nonetheless.
before he could turn around and stop the ball. They were having an opportunity to be back for the second. Good running between the wicket. 94 for 6. They are now 36 away from 26 balls. The gap is 10 between the number of balls and the number of runs they required over here. Summer again. Sachin Kumar goes for the sweep, doesn't connect. A dot delivery. 25 balls, 36 away. Jahangir walks up to Summer. Sachin Kumar. Jahangir, the experience he carries. He's got a lot of talent. And the experience he has gained over the past couple of years in the Valley. Believe me, he has been the one man when team needs him badly. He is there to stand up and step up. Here is the next one. Sachin Kumar makes the ball fly. And it is 6 more. Just Bukhara 6 coming. What a strike. Much needed 6. It's a gigantic blow. And that will keep Kishtwar Titans alive and their hopes afloat in the game. Hundred comes up for the loss of 6. It's 100 on the board. Oh, listen in again. It exploded. Explosion heard around the center. The cracks are going on. And they're loving these moments over here. They're getting the money's worth. 100 for 6 after 16, 24 balls. 30 more needed. Nadeem has got 1 over. Raza is finished. Sahil has got 3. Azim Rath has got 1 left in his kitty. And just 4 overs. They need to cover up these 4 overs. Umar has got 1. Azim has got 1, 2. Nadeem has got 3. And so let's see. Looks like Nadeem will bowl 2 out of 4. And in the meantime, here is the fresh over. Azim. Jahangir lone swings. Misses. And it's a dot ball. It's a precious dot. Thank you very much. All the listeners of JK Sports Time, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. You can also install the app which is available in Play Store. And thank you very much. Thanks a million and billion. And early into the shot, Jahangir lone doesn't connect. He's going across the line. Oh, come on. He's going across the line. You need the ball in your arc, then to go and make it mark. And this time beautifully bowled. Excellent delivery. Azim is appealing. Oh, all went up in appeal. And umpire is unmoved. Oh, we'll have to wait and watch what's going on. Is it a wide? It's a wide delivery signal by umpire. That is surprising. And Azim isn't happy at all. You got a feel for the boy, but a good call from umpire nonetheless. And with that, it's 101 for the loss of 6. Wide signalled. Rajkumar Bulletji is here in the comm box again. The man with the big heart is enjoying the game of cricket here at the centre. The man who has done very good job in this part of the world is a big name. And now he's backing this event alongside Anju Singh. It's quite some achievement. It's a massive one because of these big names. Rajkumarji is here. LOP is also here. Shagun Pariharji. And all are doing wonders. Believe me. It's the total team effort. Together, everyone achieves more. Together, we stand, divide, we fall. कहा जाता है ना एकता में बल है और बल ही हर समस्या का हल है. Exactly, Nazir. You nailed it to perfection. Your words are always lovely. It's 101 for 6. They're 29 behind. Together, we progress. And that is a good shot. Lovely timing again. Beautiful looking shot down towards us. Long on, there is a possibility of a single. 28 away. 28. Lalit Sharma ji is always there. I know that, sir. Thank you very much, Rajkumar ji, for reminding me. I know that the Dravid of Kishtwar is here. And he was here since day 1. And in the meantime, it's 102 for 6. 28 more runs needed from 21 balls. On the SAM stage, they were 82 for 7. If we talk the Valley Stars, Gandhar. Thank you, sir. Once again, thank you very much, all the listeners of JK Sports Time. From every nook and corner of the globe, we are here to tell you the story of this game which is going on here at Chaugan. The Kishtwar Chaugan is delighted. Full toss. Where is this one going? Oh, that's done and dusted through the gap for 4. Beautifully driven. A low full toss. And has made good use of that.
That were brought to you by Just Bukhara. With that, for it's 106. 24 more runs needed to win the game. Drone pressed into service. And now there is a competition going on using those rubber whistles away. They're whistling against each other. And yeah, of course, I know the boy coming from Gandarbal's Ganderbal area is known as Pompo Boy of the Valley. And in the meantime, that young lad is also earning the livelihood for his family. It's because of cricket. So we need these initiatives. We need few more in coming months, in coming weeks. We need other tournaments because young generation can earn something out of it. Oh, umpire isn't happy over there. It's a wide signal, 107 for 6. And even bowler isn't happy. And he don't want to see that. But you know, you got to respect the call of umpire. Umpire is the best one to judge it out on the field. As we watch Azim again. Crowd roaring, chanting, whistling. It's all happening here at Kishtwar Chogan. The next ball from Azim Rathar to Sachin Kumar. And Kumar goes big. And the edgish one runs down to the third man for 4. He's going to take that boundary. Just Bukhara 4 coming. It hardly matters how they come. He was shaping for that cover drive. But the edgish one runs it down to the third man. The pace behind the shot takes it away. Sped past up the turf for 4. Nelson on the board. Just 19 away. Just 19 away. With how many balls to go? 19 from 19. In the air. In the air. And it falls in no man's space. No problem. It dropped in no man's area. So no problem. One more run added. It's now 112 on the board after 17 overs. 18 overs. 12 balls. And how many runs they require? 12. It's 18 balls and 18 needed, Nazir. 3 overs. 18 balls. 18 runs is what they require to lift the title for the first time. धन्यवाद मुनव्वर। और इस प्रकार से अंतिम 3 ओवर का खेल बचा है। आखिरी 3 ओवर और आखिरी 18 रन चाहिए जीत के लिए। ये संघर्ष है इस मुकाबले में, ये संघर्षता दिखी है, ये कांटे की टक्कर दिखी है चौगान क्रिकेट स्टेडियम में। और इतनी ज्यादा दर्शकों की संख्या के सामने इस समय दो टीमें आपस में भिड़ंत कर रही हैं। 130 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और यहाँ 112 रन बने हैं। 6 विकेट के नुकसान पर 4 सुरक्षित हैं और देखना होगा यहाँ से अगले 18 गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता। बीच मैदान में नाबाद जोड़ी, हर संभव प्रयास होगा। एक क्रिकेट का खूबसूरत घमासान बल्ले और गेंद के बीच इस समय चौगान के इस मैदान में चलता हुआ फाइनल मुकाबला। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट रहा है और सफलतापूर्वक आज धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर। अंतिम 18 गेंदें और 18 गेंदों से 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पटाखों की आवाजें गूंजती हुई, दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, हर पल को वो इस समय महसूस कर रहे हैं। क्रिकेट के हर पल को इस समय जिया जा रहा है इस खूबसूरत मैदान में, इस फाइनल मुकाबले में। किश्तवाड़ टाइटंस इस समय बीच मैदान में, जहांगीर लोन और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी और सचिन है बीच मैदान में। और क्या बेहतर बल्लेबाजी की है, साझेदारी निभाई जरूर है इन दो बल्लेबाजों ने और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे अंतिम ओवर्स में। एक बेहतरीन मुकाबला, एक शानदार मुकाबला। 18 गेंदें, हर पल को आज दर्शकों ने जिया है किश्तवाड़ के इस खूबसूरत मैदान पे। इतनी क्षमता है दर्शकों की और निश्चित तौर पे कहना चाहिए पैसा वसूल मुकाबला रहा है। बहुत बेहतर मुकाबला, ये गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल जहांगीर लोन होंगे सामने, आखिरी 18 गेंदें आने बाकी और 18 रन चाहिए जीत के लिए। 130 रन बनाने हैं इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। एक शानदार बेहतरीन संघर्षपूर्ण मुकाबला, आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। और देखना होगा दूध या प्रकाश में नहाया हुआ खूबसूरत मैदान और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। हालांकि विलंबता अभी भी खेल में और दूर वाले छोर से गेंदबाजी प्रारंभ होने जा रही है। सामने हो गए बाएं हाथ के सचिन, पहली गेंद लेकर के। ये गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफसाइड में खेला, दौड़ पड़े सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती और 1 रन और खाते में। और अब 17 के दूसरे 17 रनों की आवश्यकता। ये संघर्ष था इस मुकाबले में, ये फाइनल मुकाबला है, ये आखिरी भिड़ंत है इस ऐतिहासिक, इस कीमती मान को पार करने में। और क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा है, क्या शानदार बल्लेबाजी रही है। 17 गेंदें, 17 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। और ऐसे में अगली गेंद देकर के तैयार गेंदबाज सामने दाएं हाथ के जहांगीर लोन। 17 गेंदें, 17 रनों की आवश्यकता। नदीम डार
ये गेंद और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पीछे फील्डर है, ये बाहर जाएंगे, ये चौका दे करके जाएंगे। 4 और खाते में जोड़ते हुए 13 रन चाहिए 16 के 200 इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला किश्तवाड़ प्रीमियर लीग, यहाँ जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता, 16 के 2 खाना बाकी। और आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण, और यहाँ एक बार फिर सिंगल मिलेगा, पीछे फील्डर तैनात हैं, 1 रन और खाते में। और अब जाकर के संभवतः 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 सुरक्षित हैं, 15 गेंदों से 12 रनों की आवश्यकता। क्या कांटे की टक्कर का मुकाबला, गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष दिखा है इस खूबसूरत चौगान क्रिकेट स्टेडियम में। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 130 चाहिए किश्तवाड़ टाइटंस की टीम को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, ये खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। और उसी ट्रॉफी के पक्ष में इस समय ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा वहां पर आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाए, पर सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में। और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि, रन संख्या पहुंच गई है 119 6 विकेट के नुकसान पर 17.4, 14 गेंदें बची हैं और मुकाबले को जीतने के लिए अब 11 रनों की आवश्यकता। सचिन और जहांगीर लोन इस समय बीच मैदान में, पूरी तरह से खचाखच ये मैदान दर्शकों से भरा हुआ। इस दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अगली गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेले, दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए, बहुत बेहतर रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया है और मानसिकता दर्शाई है इन दो बल्लेबाजों ने। और इन परिस्थितियों में 1 रन और खाते में। थैंक यू आकिब जो कि पिच क्यूरेटर हैं और पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया है, क्रेडिट उनको भी जाता है, बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका भी रहा है। थैंक यू आकिब। और इस समय मुकाबले की बात करें, 120 6 विकेट के नुकसान पर 10 की आवश्यकता। इस बार सचिन ने खेला ऑफ साइड में, एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े, पीछे फील्डर तैनात, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, सिंगल मिल जाएगा। और इस ओवर में बहुत बेहतर बल्लेबाजी की है, 1-1 रन से इस पारी को जोड़ा है और इस प्रकार से ओवर की हो गई समाप्ति। यहाँ 121 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18 समाप्त, 9 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, मात्र 12 के शेष। It's 9 away. It's their game to lose. 12 balls and 9 away. Jahangir Lone is in the middle and he's got Sachin Kumar Singh. And Sachin has been really wonderful with the bat tonight. He bowled well earlier on. Now he's got a job on his hand to cut out. And he's batting really well. He has decided to stand up. And you can see that. It's going their way now, just 9 away. 2 big shots and you're over the line. And they're going to lift the title for the first time in the history of Kishtwar. And it's the day-night tournament. One of the historic events of all time. Just 9 away from 12 balls. Well, I requested earlier on, there is nobody to pay heed. They're not going to hear you. And we have seen that there was a kind of rucks and roar in between. And somebody was, he lost his cool on that occasion. It looked like that he's lost his brand for a while. So it's better to focus on the game of cricket. It's better to focus on the game. So we don't need to talk about it. And it is just 9 needed. 9 away to win this game from 12 balls. Only 9 needed. 12 balls, 2 overs. They're 9 away from winning the game. And it's going to be Kishtwar Titans on verge, on cusp, on brink. Can they lift it for the first time? Looks like they're very much in comfortable position here. With 4 wickets in kitty, 9 away, 2 overs at their disposal. 9 away. 2 big shots and you're over the line. We'll have to wait and watch. Just 9 more runs needed from 12 balls. As we watch the over number 19, the second last or the penultimate over of the game is coming up. Umar left has got the ball. Crowd on their toes. You never know when it is going to be the last ball of the game. Is this going to be the last over of the match? It remains to be seen. Just 9 away. Umar left is gearing up. He's steaming in. As we watch Umar. On strike is going to be Sachin Kumar. 9 away. First ball. Sachin throws his bat at it. Doesn't connect. It's a dot delivery to start with. A dot ball. Beginners, the fresh server. 9 needed from 11 balls. Thanks to our Akib curator for preparing these kind of wickets and pitches over here in Chaugan. The second ball. This time trying to pull it round the corner. Doesn't connect. Dot delivery down to 9 from 10.
They need 9. 10 balls remaining. 2 dots on the trot. Can he make it? 3 on the trot. Is he going to push further? Will he make the batter toil hard? 2 dots already in and over. They need a couple of dots. They need wickets over here. And on the other side, just 2 big hits away. Team Kishtwar Titans led by Shubham Sean. And they are just 9 runs away. Ball number 3. Trying to drive the ball. Shot for caught behind and is turned down. It's 9 balls. 9 needed. What a game of cricket. Tensed. Suspense continues. It isn't over yet. We are not done yet. The game is on. 20 overs from inning number 1. 18.3 from inning number 2. And the game is still on. With 4 wickets in kitty. 9 away. 9 balls. Here is. He's clean bowled. Look at the celebration. He punches the air in delight. Can you believe? I can't. Nazir, 1 more wicket down here. Drama continues in the middle. हुस्न की क्या तारीफ है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी नजर में हुस्न वो है जो तुझ जैसा दिखाई दे। और यहाँ वो हुस्न दिखा है, इन श्रोताओं ने कर दिखाया है, ये बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है, ये आक्रमण कर दिखाया है, क्योंकि क्रिकेट ने परवाज नहीं माने, रेडियो ने आवाज नहीं मानी है। और निश्चित तौर पे दिख रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल छूने तक परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Thank you very much. Lovely birds. Wonderful 2-liner coming up. One after another. It's down to now 8 balls, 9 needed. What a game of cricket. A match full of suspense. A match full of drama. 20 overs one side. 18.4 balls in the second innings. We're yet to decide the champion. We're yet to decide the champion of the tournament. And they have 3 wickets in kitty. 9 more runs to get. We'll have to wait and watch. Is this going to be the final over? They got 2 balls left in this over. This is the 19th over. And overall 8 balls, 9 away. Game of cricket. Changing its colors. From ups and downs, highs and lows, ebbs and flows. We can't say anything. The 2 teams are not separated yet. The game is on, the fight is on. They're fighting it. They're sweating it out here at Chogan tonight. A night to remember, remarkable night. It is just 9 away from 8. On strike is going to be Asim Manzoor. The man of big moments. The man of big moments. He can be the man tonight. Will he take his side of the lineup? Jahangir Lone is still there on the other side. Asim Manzoor to face the likes of Umar Lefty. Lefty has bowled 3.4, 2 for 18. Really well. He has been good with the ball. He is bowling well at the moment. As we watch, 121 for 7. They need 9 from 8 balls. 8 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता। काफी संघर्षपूर्ण ये मुकाबला, आकर्षक मुकाबला इस समय चलता हुआ, और लगातार अभी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसके पक्ष में यह मुकाबला जाएगा। फिलहाल संघर्ष अंतिम गेंद तक, आखिरी गेंद तक, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये मुकाबला चल रहा है, हर पल कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक और डॉट गेंद, और यहाँ अब 7 गेंदें बची हैं, और 7 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए 9 रन अभी भी चाहिए। क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव है इस मुकाबले में, जब तक ना आखिरी गेंद फेंका जाए, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल है। ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, या रंग बदलते देखे गए हैं। ये क्रिकेट का खूबसूरत खेल, बहुत बढ़िया मुकाबला। ये क्रिकेट के इतिहास में, किश्तवाड़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का टूर्नामेंट, वो भी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, और इतनी ज्यादा भारी मात्रा में दर्शक, और जो अनुमान लगाया जा सकता था उससे कहीं ज्यादा दर्शक यहां पर मौजूद हैं। एक और बेहतर गेंद, एक और खूबसूरत गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है इस डॉट गेंद के साथ। 6 गेंदें बची हैं और 9 रन चाहिए। ये मिडन ओवर, वो भी 19वां, और क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि इस प्रकार के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं। Rare from ball over there. What an over. What a spell. You got to praise the lad. Praise his gallow. Take a bowl, man. What an over. Excellent. That too, the 19th of the innings.
penultimate over, second last over, and has been up to the mark with the ball. 1 over, no run, and a wicket going his way. And it was a brilliant over. It's down to the 6 balls, 9 away. Shubham Shan's Kishtwar Titans tonight. They're enjoying under a drone camera over there, which is pressed into service. But the excitement is telling us things are changing. Things are going really nice. And it is 121 for the loss of 7 now. 9 away in the final over from 6 balls. They're excited. Hands aloft, waving their hands in front of drone camera and telling their family members we're here. We're witnessing the game of cricket, a cracker of an encounter, crackerjack of a game underway. 9 needed. 1 over, they need 9 runs. Junaid Bashir has got the ball. Will it work here? Captain has gone back to the prime all-rounder from District Budgam. He's got the ball in his hand. Can it deliver? Jack Lone is going to be on strike here. 9 needed. He has done in the past. Will he do it again here? Can he repeat it tonight? He has done in the past, in the history. He has got a history. And he has been the man for his team. In the meantime, 1-1 for 7. 9 needed. Those who are new on our YouTube channel, you can subscribe to channel and press the bell icon and be the part of JK Sports Time. You can also install the app which is available in Play Store. Look at the attendance, manifold, tens of thousands, young, old, girls and women coming in numbers to support their clubs, and they're supporting the game of cricket. That is the spirit which is going day by day, over by over, ball by ball in Kishtwar tonight. 9 away, 7 wickets down, 6 balls remaining. Asif Saeed, famously known as Junaid Bashir of Budgam, is going to bowl in the 20th over. Crowd on their toes. Nobody is seated. They're on their toes. Excitement is running very high. They need to control their adrenaline flow. Ball 1. And Jangir Lone is undone with a beauty. He's clean bowled. Can you believe? Well, it's remarkable turnaround. Asif Saeed, the Junaid Bashir of Budgam, the hero rises to the occasion, and Jack Lone is on his way. It's a huge and a massive bolt and blue. Oh no, it's a bolt from blue, and it's a massive jolt, and it's a massive blow, believe me. और इस प्रकार से जहांगीर लोन के विकेट पर और इनाम की अगर हम बात करें, धनराशि का आज बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। कामधेनु पेंट्स एक कंपनी लेकर के आई है कुछ धनराशि, जहां विनिंग टीम को 3100 रुपये की धनराशि दी जाएगी, मैन ऑफ द सीरीज को 2100 रुपये की धनराशि, और उसके अलावा मैन ऑफ द मैच को 1100 रुपये की धनराशि। ये ऐलान हुआ, ये स्पष्ट किया है कामधेनु पेंट्स की ओर से, और उनका धन्यवाद करना चाहेंगे टीम्स के लिए। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, विनिंग टीम को 3100 कामधेनु पेंट्स की ओर से, और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2100 और मैन ऑफ द मैच के लिए 1100 रुपये जो है वो इनाम दिया जाएगा। और क्या शानदार और बेहतरीन धनराशि पर यहाँ विकेट मिला है। ये नहीं आएगा स्क्रीन पे, ये उसको भेजना है, उसको कैमरामैन लाइव पे हमने दिन धन्यवाद कामधेनु पेंट्स की ओर से। और एक बार फिर हमने जिक्र कर दिया कि विनिंग टीम को 3100 रुपया, उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को 2100 रुपया और मैन ऑफ द मैच को 1100 रुपये इनाम दिया जाएगा कामधेनु पेंट्स की ओर से। पर इस समय मुकाबले की बात करें, संघर्षपूर्ण मुकाबला, 121 पे 8, 5 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता, ये संघर्ष था इस मुकाबले में। ये बेहतरीन मुकाबला, क्या कुछ होने वाला इस मुकाबले में अभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, ये जालिमाना खेल भी कहा जाता है। और निश्चित तौर पे कई दिल टूटेंगे, कई आशाएं जुड़ेंगी, कई उम्मीदें जुड़ेंगी, और किश्तवाड़ को एक बार फिर क्रिकेट ने नया इतिहास दिया है। जुनैद बशीर, 5 गेंदें, 9 रनों की आवश्यकता, और बड़ा खेला है और स्टेडियम से बाहर ये जस्ट बोकारा छक्का आया है। या 3 रन चाहिए जीत के लिए, 4 गेंदों का आना बाकी इस फाइनल मुकाबले में। Clean strike, great shot, under pressure is never easy. Wyatt Perez shining like a diamond in the night sky of Kishtwar, no doubt about that.
Lovely, excellent, adorable, add-on, fabulous, and fantabulous. It's Vaitele for you, the boy from Bijbihara. Is this the last ball of the game? Will it run down to the boundary? Just a single here. And they are now. I think it's up the bat, it's given as played. So they're how many runs behind? They're 2 runs behind from 3 balls. 1 to level, 1 to tie, and 2 to win. 1 for the super over, and 2, you're over the line. You're the simply champions of the tournament. It's 3 balls, 2 needed. 128. Those who are new on YouTube channel, you can subscribe and press the bell icon. We're also available in Play Store nowadays. Just go there and install the app. Here we are. This is ball number 4. Could this be the last ball of the show tonight? Could this be? Here is Junaid Bashir to Asif. He works it away onto the onside. Call is for 2. He's going back for the second. And Shubham Shawns. Kishtwar Titans are the crown of champions of Kishtwar Premier League Season 1. Epic night for Valley Stars Ganderbal. And congratulations, emancipation, and ecstasy for Team Kishtwar Titans. And look at the crowd. They invaded the field. And they invaded the field to celebrate the glory. The title is with Kishtwar Titans tonight. They're the champions of the tournament. And Nazir, once again, I'm going to repeat, epic night for Valley Stars. A night to remember, and they can't forget, they can't sleep peacefully tonight, believe me. It's going to give them few sleepless nights. And talking of the winning side, they held their nerve to go on to lift to the title. And what a remarkable victory, thanks to the likes of that man from Bijbihara town. It was that shining diamond like that of sapphire, shining bright. It was Vaitele with that wonderful clean strike like that of whistle, and takes his side over the line with this massive win. Yeah, no doubt about that. He just nailed it to perfection. But tonight our message is going to be, those who are new on YouTube channel, just go there, subscribe and press the bell icon. Those who are new on JK Sports Time, just go into the Play Store and install our app and be the Power family. With this message, KPL 1 is done, but many more to come. Myself, Munawar Tanveer, alongside Sheikh Nazir, taking you back to the studio of JK Sports Time. We shall be back next time. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.